Welcome, guys, to the Out of Office podcast, where we talk to industry leading experts in the space of online businesses. So, if you're curious to get started or if you want to scale up your business, this is the one stop solution for that. We at Out of Office Podcast, which is powered by SyncUp, are building the world's largest free community for digital businesses and digital business owners. And you can access this community by clicking on the first link in the description. Hope you enjoy this podcast. So hey everyone, my name is Vidhaan Jain. I create content under the name Wiser with Vidhaan on Instagram. That's something that I have on priority right now. But apart from that, I run a business. It's a startup called the Bedbox, which is a co-living spaces venture dedicated to solve the student accommodation problem. So it's a student accommodation venture. Yeah. And Wiser with Vidhaan is a place where I create content around finance, economics, stocks, investing, and being wiser in general about your finances. And yeah, that's a brief, short introduction about what I do. And let's see how Trithvik is able to pull out things in the Yeah, conversation here on. absolutely. Thanks so much for joining in, Vidhan. And the first thing that I want to touch upon is that in this whole day and age of the internet, right? People are just chasing online businesses. They're trying to hustle, do start an agency, start a freelancing business, start something else, right? But with you, something that really struck me even when we had initially started speaking, right, is that you have like an offline business, right, where you literally have like a physical place of business. You're operating, you're solving for a very unique sort of target audience, which is students, right? So can you talk a little bit more about your startup, because I think a lot of people will be curious about it. So yeah, you can go ahead and talk a little bit about that. Sure. So, firstly, thank you for having me, Ritvik. I'm excited for the Yeah. conversation and excited to see your journey as well. So, Mm-hmm. the Bedbox essentially sprung out of randomly. No, I wasn't hunting for a business to do. Okay. I was going along in my journey कि ठीक है तब तक MBA कर लेंगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है. I was working Mm-hmm. at Royal Bank of Scotland, and suddenly I was living in Delhi. Delhi University was my Mm-hmm. college. Did my graduation, then I was Mm-hmm. working at Royal Bank of Scotland for 2.5 years. Okay. So 6 7 years in Delhi, out of my home. I, Mm-hmm. as a student, as a working professional, faced a lot of problems being a tenant Mm-hmm. and being a person who's Mm-hmm. staying outside of his home. Okay. And since I read a lot of books, I hear a lot of podcasts. One thing we Yeah. both know is to create a big business, that has to be through solving a problem, and best Mm-hmm. if that's a problem that you have faced yourself, right? Mm-hmm. And Mm-hmm. because that's something that you can be most passionate about, and Yeah. that's an important ingredient requirement. So bus Yeah. randomly I figured out कि यार this is something I faced a lot of problems myself. Ritvik, Mm-hmm. your network is, I'm नहीं, unable don't to worry see. about it, man. Don't worry about it. वो actually ऐसा होगा, back end will record perfectly. Don't worry. अच्छा, ओके, कूल, परफेक्ट. Yeah, yeah. ठीक है. तो so yeah, that's when it struck me कि ठीक है. So I had a property which I Yeah. went to check how's it going, just randomly, and I figured it Mm-hmm. was all rented out. Somebody else was using the property to accommodate other students. Essentially, they were running a hostel. I decided to have a Mm-hmm. conversation with the students living out there, and Yeah. terrible property condition, terrible Yeah. services, the food, everything was as expected. Hostels mein, this is what happens. And Mm-hmm. that got me a little empathetic towards other students, other people. And I kept Mm-hmm. on thinking, yeah, why does this problem exist? Like, this is an Yeah. objective kind of truth that life of a student away from home is hard. Why is it Mm-hmm. hard? It's hard Mm-hmm. because whenever you get to a rental property, most of those, or even a hostel, ये सब लोग उन लोगों के हैं, these guys are 55 60 year olds. These guys have Mm-hmm. invested in real estate, and you're just their Mm-hmm. ROI. All they care about Yeah. is their ROI on their real estate. They don't give a shit about what your problems are. Students के life Mm-hmm. को कैसे solve किया जा सकता है, creating Mm-hmm. vibrant creative spaces and Yeah. anything that a student needs, right? I Mm-hmm. figured कि यार I wish I had something, जो भी मेरे दिमाग में आया कि काश कुछ ऐसा Mm-hmm. मिला होता. I decided to build that. And Yeah. essentially I kept on digging out, I crunched the numbers, and I figured out कि ठीक है यार विधान, रिच डैड पुअर डैड में भी पढ़ा है कि
real estate तो has to be something, plus if I want to do Mm-hmm. businesses in my life, at least I have to Mm-hmm. optimize the assets that I already have, optimum Yeah. utilization of resources. So I thought, Yeah. bottom line, this could be a very well passive source for me, Mm-hmm. and I could finance my own MBA. Upside Yeah. is I can replicate this model and go on Mm. expanding like anything. Yeah. I crunched the numbers, created really nice, cool looking places, something that our generation would love to stay at. We Yeah. gave them on-door laundry and iron services. We gave them play zone, access to the play zone with table tennis and everything, weekly events. That's nice. We gave them meals Mm-hmm. for 3 times. We gave them Yeah. everything to simplify their life while they Yeah. focus on their own goals. Because essentially, Mm-hmm. when I was in Delhi, you were out somewhere else, हम लोग जाते पढ़ने या जॉब करने, but there are so many household chores and what Mm-hmm. not that your time gets wasted on. So essentially, Yeah. we decided to tackle on everything by delivering almost like 7 8 out of 10 services to them. Yeah. And yeah, essentially I had to, it was something that I had to kept on, I was all in. I was like, Yeah. I am someone who, when obsessed with something, can work for 18 20 hours and still don't Yeah. feel like I'm working hard enough. So Yeah. I was just working very hard on that and also trying to automate that after Mm. we got through it. You want to dig in a little Mm. bit, ki how we achieved the profitability and how did I go about from a nobody guy to Yeah. marketing, how the funnels were there, what lead generation things I did, everything on my Yeah. own, Yeah, right? man. How did Absolutely. I build a Because website? yeah, because the interesting thing is that, that's exactly what I want to get at, right? That Yeah, people, they're too stuck up by looking, you mentioned like Rich Dad Poor Dad, right? It's one of those yeah, old school books which talks about like real estate as a business, real estate as, something to get started with in your, investing business journey, right? Many people are not able to understand that, these physical, these real businesses have probably, not only more fulfillment, but they're also solving like real yeah, life problems, and the scale at which you can yeah, expand into is like crazy, right? So I would love to hear from you, yeah, like yeah. how did you go about, building this up to what it is today? Yeah. Yeah, cool. So, yeah, I decided I will outsource a lot of stuff. I don't want headache, first of Okay. all. What is it that I want Hmm. in my life? I don't want a lot of headache. मेरे को बहुत सारा मेरा involvement नहीं चाहिए. That would, Huh. and I understand that restaurant businesses and food businesses are something that Hmm. have the lowest retention rate of staff. And that was the Yeah. sardardi I did not want to take. सबसे पहले इसको Yeah. आउटसोर्स करना है. I had to find a reliable catering partners. उनके staff को किसी भी Hmm. तरह की दिक्कत हो, they have the alternatives. They send it. Hmm. My services never go off, right? Hmm. I Okay. outsourced to different laundry partners, different things, a bunch of things I Yeah. did to keep my sardardi minimum. Hired Yeah. a lot of a few of my staff, the key positions, and Hmm. yeah, decided on painting it through really creative Hmm. designs, searched on Pinterest, decided to Hmm. put them on. I used to, even draw. So all of the things I've always wanted to do, I was kind of fascinated with interior design. I did that. I was Yeah. kind of fascinated about building a website by my own. I did that. Yeah. I was Yeah. then running ads. I learned all of that, and then I was running ads. Hmm. So there was this fantastic lead generation campaign that I did, which Hmm. struck me when I was buying my domain. GoDaddy says that you can get a domain for 99. When you open Yeah. that, you see that Yeah. when you buy a domain for 4 years, that's when you get Hmm. the domain for 99 for the first year. And then you pay Yeah. 799 for the rest of the years. Hmm. 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 I decided to do my campaign, book your Yeah. stay, and get a 1 month free stay. 1 month free stay was the ad that was running through Okay. my page, and Hmm. that got me 400 plus leads Okay. in my Wow. pipeline. So they Hmm. sign up, and then there was a Zapier integration. The moment they Yeah. signed up, filled up the form, their interest, kitta duration, which college, a lot of things, Hmm. and then an email was immediately sent up to them that said, Yeah. when you pay for 11 months, you get the 12th month free. Yearly package Got it. में you get 1 month free. That almost Mm-hmm. nobody will pay up for, but I got the hot Yeah. leads. And Yeah. even before I started Ritvik, so a lot of people do is they Mm-hmm. keep their product ekdam ready and then they go about marketing. While Yeah. they need to start marketing even when their product is not ready to gauge the market interest. And so essentially True. you get the pipeline of customers, paid customers rolling as soon as your product is ready,
right? So even Yeah. when before my product was ready, I had a pipeline of about 20-25 odd people who were paid and in pipeline, who booked their Okay. who paid their booking amount for first 2 months. Yeah. So that was very promising for me, very reassuring. And Mm. eventually, it in 1.5 months, we got to full occupancy, which was 50 beds, approximately 50 beds. We Wow. got to full occupancy. I love that. And Yeah. then my next target was to Yeah. get it automated and assign somebody else to sit Mhm. in my positions doing the key things. So I did that Understood. training of a guy 2-3 months, and yeah, Understood. that's when pandemic hit after 6-7 months. Okay. उसके बीच में I was doing Toastmasters to work on my public speaking skills. So Toastmasters Okay. really got me super confident कि bro तू तो Mm. impromptu speech competitions में भी बकाबक जीत रहा है awards. लोगों को तो मजा आ रहा है Yeah. जब भी तू randomly बोल रहा है. Yeah. So that was very reassuring for me. So when the pandemic Mhm. hit, we guys listen to a lot of podcasts and everything. That's when I started my own podcast as well. The Oh 20 show. wow. So most things that I've ended up doing एकदम random stuck me मेरे दिमाग में सीधे Yeah. land किया the 20 show. बस ऐसी Yeah. ये 3 वर्ड्स लैंड किए मेरे दिमाग में। दूसरी तरफ से Yeah. लैंड किया, ये नाम का पॉडकास्ट चालू कर देते हैं। और Yeah. बस आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट एंड देन इवेंचुअली आई Mhm. स्टार्टेड इट एंड अच्छे से थोड़े टाइम बाद इट इवन स्टार्टेड टू रैंक अमंग्स द टॉप 3% पॉडकास्ट ग्लोबली, Mm. which was again very reassuring. So Oh yeah, wow. this is how I entered content creation Yeah. then. That's nice. That's nice, man. Like, first of all, like, before we get into like your content creation thing, right? I think what you have done very nicely and very beautifully is that you have taken something which is like a very traditional business, which many people might even call Yeah. like a PG sort of a business, right? But you have revamped Yeah, that. yeah, yeah. But you have also mixed it up with technology, Repackaged it, right? And absolutely. the online space, Yeah, which I think exactly. is, Exactly. which was probably a masterstroke where you have probably Absolutely. gained tenants, you have probably gained, customers faster than, how traditional businesses would have gained, right? These Yeah, same people you're absolutely. talking about, right? You sort of like almost kick them in the balls that, hey guys, I'm going to do it Absolutely. It faster was and a better than you, fucked up market. right? The hostel and Yeah, PG market was bilkul. so fucked up. People were saying, Yes. What are you getting into?" And Yeah. yeah, they then themselves came up to tell me, ki, "Bro, you killed it. You like legit Yeah, yeah, killed it." yeah, absolutely. Because like before the pandemic, I was also living in like a PG, right? And Yeah, I honestly felt the same. Like it is so funny, right? Like during that time, even I thought that hey, like this PG business is damn good, right? If you do it well, because now see, you're yeah, obviously solving the problem for the students, but there's another party involved, which is parents. Okay, so these children's parents, not sure like parents. what age range these people were who are living in your this startup, but the parents also when they see something like this, or if Yeah, I as a child show it to my parents that hey guys, this is where I want to live at, this is like almost comparable to the other PGs, they would yeah, instantly be convinced, right? That okay, yeah, you go yeah, and live there, right? Or if they yeah. themselves are researching, right, and you're giving them that kind of a Absolutely. service, they would be convinced in just a second, right? Absolutely. So I think you have done that like beautifully well, and Yeah, I think that's the reason of getting to full occupancy so yeah. quickly as well, right? So that's fantastic. Absolutely. And So essentially what yeah, you said, yeah, go yeah. ahead, go ahead. Yeah, please go on, please go on. Yeah, so Oh, so I was just plugging in the hmm, fact that where you started, ki people want to be, people are chasing the yeah, limelight businesses, hmm, the businesses that look glorifying on the yeah, internet to other people. But hmm, essentially, look around you. There are technologies advancing at a phenomenal pace, yeah, but not a lot of things around you are. yeah, Like this PG student accommodation business, it has fantastic scope, abhi yeah, bhi, right? yeah, And upgrade these things, absolutely, upgrade your daily experiences, absolutely. right? And that's what I did. It's a traditional Hmm, business, and I just repackaged hmm, it. I did something that suited more to the current generation जो बाकी लोग कर ही नहीं yeah, सकते, right? The 55-year-olds have no clue how to do yeah, that, true, right? Plus I was uniquely positioned in a way that I experienced different yeah, landlords. I know how they have managed to keep their sardardi yeah, down, who were yeah, assholes, what made them an hmm, asshole, and how I kind of figured out a sweet spot hmm, between कैसे मेरी सरदर्दी yeah, कम रहे, कैसे उन लोगों के एक्सपीरियंसेस yeah, मैक्सिमाइज रहे, कैसे मेरा एक्सप्लॉइटेशन yeah, कम हो और कैसे उन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन मिनिमम bilkul, हो. bilkul, So along with all the aesthetic yeah, part, integrating technology yeah, with it, and eventually everything was yeah, inbound. I had to do not yeah, much efforts, and then naming it when you see hmm, other hostels,
Ma Yeah. Bhavani, what Yeah. nonsense, right? Matlab, to us, I wouldn't choose Yeah. that. I would go to a PG or I would go to a flat Yes. any day, right? Yes. Because you judge a book by its Yeah. cover, right? So when you this is a pleasing Yeah. sound, a pleasing Yeah. name, the bed box, it stands out Yeah. immediately. You see the pictures, it stands out Mhm. immediately. When you give a call, abhi bhi, whenever there's a big occupancy coming, like that happened when the Yeah. pandemic ended, and when I Yeah. started, I am the person who goes all in for 7 to Mhm. 15 days, who's the one who's picking up Yeah. the calls. And when it's me answering the calls, the conversion rates are through Yeah. the roof, relative to anybody Yeah. answering the calls. Kyunki the passion in my storytelling, why am I doing Yeah. this, sir? To the Yeah. parents, to the students, they both of those Yeah. parties love me. Absolutely. No, that's true, man. So That's true. yeah, Like these are even some things that worked in well. our own agency as well, right? Like, since I have a marketing agency there as well, I've seen that, see, often what happens is like you can automate a lot of things to a lot of extent, right? But some things which, especially very close to your heart, that, okay, what is the story? Why am I doing this? Those things they're best told by you yourself, Yeah, right? There's always that whole thing of, yeah, absolutely. paying personal attention, giving people that, listening to these people, why do they want to come here, or why do they not want to come here, what are their fears, what are their troubles, right? So I think you've learned a lot from all of this, right? Which is great. And I Yeah, would urge anybody, yeah, like a lot of people who come to me, also a lot of people who watch the podcast as well, they're always just trying to chase whatever they see on the internet, right? And much like, how you are telling them, I would also tell them that, don't chase everything that you see online or in books. Rather, think for yourself, see, yeah, observe around around yourself, that, okay, what is something that I can make better, and yeah, that is everything that you need, yeah. right? So yeah, that's there, man. Yep, And absolutely. talking about, so now you have become, like, you told me that you've become more serious about content, and you're doing content full time, right? So Yeah, talk me through, through that, like, what is it that, attracted you towards content? What is it that, keeps you motivated? Because creating content is, it requires a lot of consistency, right? Every single day, right? You need to show up every day, you need to absolutely. brainstorm ideas, you need to ensure that, every single video that goes out is actually improving, or at least staying at the same level in terms of quality, otherwise your followers fall off, right? So Yeah, talk to me a little bit about your content journey. yeah. Cool. So Ritvik, I'll break it down into Okay. two parts. Firstly, what motivated me, what inspired me, the Hmm. whys, the Yeah. whys, and then I'll touch up on how did I go Yeah. about it, what all I had to work inside my own head, how did I get a lot more Yeah. consistent with it, how did I it end up Hmm. working out for Okay. me, right? It's sort of kind of has started to That's work out nice. for me. Yeah. So the whys were uh, Hmm. leverage, Hmm. distribution. People knowing me is a Yeah. byproduct. I don't care about people. Of Yeah. course I do, but that's not something that I was uniquely Hmm. optimizing for. I was optimizing for, I see a lot of Yeah. potential in me. I think a lot of people, the right Hmm. kind of people, I can't just go out DMing people, cold reaching out Yeah. people, right? That doesn't Yeah. work out. I think I want people to be reaching Hmm. out to me, the people who Hmm. like me, who think I could be of Hmm. help to them, who think I could be a good camaraderie Yeah. for them, I could be a good brother for them, I could be a good business Hmm. partner for them, Hmm. anything, right? If I start creating content, I will be reaching out to those people in their Hmm. feeds, and then जिसको भी मैं काम का लगूंगा, they will reach out to me, and I will get a lot of opportunities served up in a plate, and then I get to choose which platter, which plate I want to Yeah. pick, right? That's something I thought Hmm. of. Getting to connect with a lot of people, जिनसे मैं connect करना चाहूंगा, that 95% of the people we know around us aren't hustling Hmm. as much. Hustling भी ठीक है यार, hustling का fine Hmm. line है, but they're not necessarily driven Yeah. enough, right? We want to be surrounded with people who are Hmm. driven, who aspire to do crazy Yeah. things, right? Some things that most people would talk them Yeah. out of. Ki, bhai, don't do this, yeah, this is Hmm. impossible, you're risking yourself, you're gonna spoil Yeah. your life, and things like it. So I wanted to be surrounded with a Hmm. lot of those people, high risk takers, high achievers, high Yeah. ambitious people, plus Hmm. supportive people, right? Hmm. Right. So I wanted to be able to be friends with a Hmm. lot of people, build my Hmm. credibility, my authority. I'm very Yeah. extroverted.
आई लव Yeah. टॉकिंग, तो मैंने पॉडकास्ट जब स्टार्ट किया, तीन चार पर्पसेस, इट वाज अ सुपर स्वीट Yeah. स्पॉट फॉर मी. It was a beautiful intersection of a lot of things I love doing. Like I love Yeah. talking, I love taking yarn and Yeah. giving yarn, right? I love connecting with Mm. new people, and I would love to build influence. I would love Yeah. to build distribution for myself. All Yeah. of these things were being worked out through this. I would love to bring a personal to create a personal brand Yeah. for myself. Those things inspired me to create a Mm. podcast. Then I was off for 2 years. Okay. What Mm. happened? What happened was Mm. consistency, Yeah. burnout, and a lot of Yeah. things. Self image wala wo, I started to think, am I even like imposter Mm. syndrome and whatnot, burnout and all. A lot of these Yeah. things happened. Plus friends Mm. around me, they started acting a little Mm. salty, and so many things Mm. started happening which I had Yeah. no clue of. Ki acha, Yeah. oh, and I got a little Mm. taken aback. But sabse pehli cheez, nothing outside can Yeah. take me off, right? It's always me standing in Mm. my own way. That it's just Yeah. me who gets to stop me from wherever Yeah. I want to go. So I let things get the Mm. best of me. बट सबसे बड़ा दिक्कत ये था, परफेक्शन Mm. मॉन्स्टर. आई हैड टू बैटल दैट Mm. परफेक्शन मॉन्स्टर, क्योंकि मुझे बड़ा परफेक्शन का वो है. आई कैन नॉट पब्लिश अ वीडियो जब तक मुझे बहुत बढ़िया नहीं लग रहा हो, कुछ Mm. नहीं हो रहा हो. आई हैड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. ब्रेने ब्राउन्स बुक्स हेल्प Yeah. मी अ लॉट. Gifts of Imperfection, Daring Greatly, and a Yeah. lot of things. So yeah, I figured out I had to kick perfection at its Yeah. butt. So I took a break. पहले तो छः, I thought I got so burnt out creating content 24/7, because I couldn't put out things that I didn't truly enjoy Yeah. watching myself. तो मैं अब एडिट करता रहूँगा, Mm. रिकॉर्ड करता रहूँगा, स्क्रिप्टिंग अच्छी Mm. करता रहूँगा, बहुत अच्छा एडिट कर रहूँगा, ये सब कर रहूँगा, तो 12-14 घंटे लग जाते हैं. मेरी आंखें यूज्ड टू गेट एकदम so Yeah. dark circles, red, because they get quickly Yeah. flared up, Yeah. irritated. And then when I get to sleep with all the Mm. screen time, my Was sleep effective. got Mm. fucked up as well. So yeah, one thing led to another, and I had essentially you will Yeah. fall off the bandwagon अगर ऐसा Yeah. चल रहा है तो. I thought I'll take a break for 1 month, get myself an editor and a team. 1 month turned into two, and then into 10, into 12. I got busy with my Yeah. business, and I didn't get back to Mm. content. But this was something that was brewing inside of my Yeah. head. Then I decided कि चलो, I'll just be away of socials Mm. entirely. So for 6 to 10 months, Okay. I was off socials entirely, and I was working out 3 times a day. I was preparing for Ironman. I was swimming in the Okay. evening. I was running and alternating between running and cycling every other day, swimming in the evening, and then every 2 days के interval में I was doing Okay. strength training. So I was loving it. I was loving being out there in the Yeah. world, क्योंकि ये pandemic से coming Mm-hmm. out था. So much computers, so much Yeah. screen time, so much home. I was loving just laughing my Yeah. ass off with people doing Mm. crazy stuff, and pushing my Yeah. body and exploring that. So that is alongside all my business and my Yeah. investing and stuff, right? Then I got back to content this July, seeing a lot of lot of Yeah. photo people creating content, and getting a lot of amassing a lot of followers and Yeah. everything. So I thought, yeah, I must. It's high Yeah. time. So I got a team. Didn't essentially got a team. थोड़ा दिन मैंने खुद से momentum में आया. Plus I learned a lot of mental Yeah. models in this Mm. way, कि क्या क्या मेरे में प्रॉब्लम थी, क्यों मैं ऊपर जाकर वापस Yeah. नीचे आ जाऊं लाइफ में. इतना डिसिप्लिन से मैं बिल्ड करता था Yeah. चीज़ें. उसके बाद eventually I got in a downward momentum, जिसको मैं कैच नहीं कर पाता था, until I found myself in a Mm. valley. So I got to learn that Yeah. कि यार, what's exactly Mm. happening here. Why am I ending up in a Yeah. valley? Then I figured out everyone goes through Mm. that, right? And then this peaks and valleys, I was sick of it. By this is so much effort Yeah. wasted, coming down here and then climbing, coming down here and then Mm. climbing. This is so much effort Yeah. wasted. Why is it happening? I learned a lot of that, and then I read this very beautiful quote. I was running. It was a 3 hour run for me, and I was listening to Haruki Murakami's book, What I Talk Mm. About When I Talk Yeah. About I've Running. read. Usme he said such a Mm. beautiful thing कि I Yeah. you've read Yeah. that? He's one of my Wow. favorite authors. Yeah. So Yeah. it's such a good book, yeah. Yeah. Mm. So है ना? Yeah. Yeah. What other books have you read of him? Bro, I've read like almost, I would say most of them.
So Sputnik Sweetheart से लेके मतलब even his one of those very thick books. I'm forgetting the name. It's like a Oh, very thick book. I don't know. It's like some number है 3061 or I don't know अरे what it is. But like Haruki Murakami is अच्छा, like the ओके favorite, one ओके of our ओके, favorite. काफका, एक तो he has Kafka on the Yeah, Shore. Kafka on the Shore. Yes. Yeah, Kafka on the Shore. He has got Yeah. very Men Without Women. Yes. So I have a hard time reading fiction that I need to Yeah. work on. इसीलिए I could only gobble up his what I talk about when I talk Okay. about Got it. running, because it was his Yeah. memoir. Yeah. तो उसमें I learned something super nice from him. उसने कहा मेरे को दो चीज़ें लाइफ में हमेशा Hmm. करनी है. एक है रनिंग एंड दूसरी है Yeah. राइटिंग. और ये दोनों चीज़ों को जब मुझे करना Hmm. होता है ना, आई डोंट गिव माई Yeah. 100%. Okay. I just go to my Hmm. 80% और वहाँ पर I Hmm. stop when I'm still craving for Hmm. more. I don't exhaust my Hmm. cravings. I stop when I'm still craving for Yeah. more ताकि that craving, that residue brings me back again to doing it the next Hmm. day. So that was so Yeah. good. That was the key. I I always Hmm. I almost always exhausted my Yeah. cravings of Hmm. doing things. Content I would overdo, workouts I Hmm. would overdo, writing I would Hmm. overdo. I was always overdoing it because we listen to it Hmm. traditionally कि 110% दो यार अपना हर बार. तो then I figured out कि यार best है if I'm Yeah. working out and I just give 75-80%. I could relate Yeah. as well, no? कि when you're not pushing that much, you're completely fine. And that's what got me rolling ki theek hai, this is how you create Hmm. rhythm. This is how you create rhythm for things that you Hmm. continuously want to be Yeah. doing. Don't Hmm. avoid the burnout. Don't go past the 100%. Sometimes, Hmm. occasionally you do. Test yourself out. Occasionally run a half marathon. Occasionally run a marathon. Occasionally try setting a new Yeah. PR. Occasionally try lifting the Hmm. heaviest weight. But you can't go about doing that every Hmm. single day. Otherwise, you won't end up even, you will fall off the Yeah. bandwagon in itself. तो ये मेरे लिए बहुत Hmm. अच्छा लर्निंग था क्योंकि भाई लाइफ ऑप्टिमाइज करनी है, इतनी सारी चीज़ें करनी है. देन एक और बहुत अच्छा मेंटल मॉडल यू वांट मी टू प्लग इन हेयर. क्या था Yeah. Yeah. वो? Yeah, man. Go ahead. Go ahead. Yes. Sure. Cool, cool. So then so there's this guy Okay. Nick Peterson, high Hmm. performance coach. मेरे एक फ्रेंड है कनाडा में रहते हैं. ही इज टेकन अप हिज काफ़ी महंगा Okay. कोचिंग देता है वो बिलियनर्स को, कंपनी के Okay. सीईओज को. तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा दिस 12-day course of him that he Okay. purchased. He said, watch it. These Okay. are the recordings of it. But make sure you're taking the notes, you're doing the homework, and you're doing every single day for the 12 Okay. days straight. ठीक है. There was this concept that blew Hmm. my mind, which was MED and Okay. MRV. ठीक है. MED is minimum effective Okay. dose. MRV is maximum recoverable volume. Okay. ठीक. टू गेट कोई भी चीज़ करते Hmm. टाइम उसको अगर मेंटेनेंस मोड पे रखना है, जैसी वो चल रही है वैसी की वैसी, देन यू हैव टू अप्लाई द मिनिमम इफेक्टिव Okay. डोज. लेट मी पुट अप अ सिचुएशन व्हाट मोस्टली हैपेंस विद अस. वी स्टार्ट वर्किंग Hmm. आउट. हम लोग थोड़ा अच्छा गेन कर लेते हैं, अच्छे Hmm. मसल्स वसल्स बना लेंगे, प्रायोरिटी पे इसको रख दिया. सडनली लाइफ हैपेंस, यू हैव टू वर्क अ लॉट, ओवर टाइम, व्हाट नॉट, वर्क Hmm. डिमांड्स. हम उसको एंटायरली छोड़ Hmm. देते हैं एंड देन वी जस्ट गेट बैक विद Yeah. द वर्क. फिर हम कभी किसी और चीज़ को प्रायोरिटी बना लेंगे, जैसे कभी रिलेशनशिप बन गया अपने आप Hmm. पैशन में आकर, तो फिर हम बाकी चीज़ों को Hmm. कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे. फिर कभी बाकी चीज़ें करने लगे तो हम रिलेशन को Yeah. कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे. हाउ टू हैव इट Hmm. ऑल? अगर मुझे सब Hmm. कुछ चाहिए कि कुछ भी ना Hmm. गिरे, सारी चीज़ें ऊपर Hmm. जाती रहें, तो वो कैसे किया जा Hmm. सकता है? That was the plug Hmm. for me कि this is the MED and MRV वाला Yeah. formula is it. So now think about it. 5 एस्पेक्ट्स Okay. मानते हैं. फाइनेंस, फाइनेंसेस, करियर फाइनेंस एक चीज मानते हैं अपन, ठीक है. Okay. रिलेशनशिप्स मान लेते हैं, हेल्थ मान लेते हैं. Hmm. ये 3 चलो मान लेते हैं अपन Okay. फिलहाल के लिए, है ना. अब मिनिमम इफेक्टिव डोज, मिनिमम मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम. Okay. एनीथिंग दैट यू डू बियॉन्ड द मैक्सिमम रिकवरेबल Hmm. वॉल्यूम विल गेट यू Okay. इंजर्ड. आपने वर्कआउट ज़रूरत से ज़्यादा वेट Hmm. मार लिया, आपको इंजरी हो जाएगी. आपका मसल जितना नहीं बना उससे ज़्यादा आपने दौड़ लिया, आपको आईटी बैंड, कोई सा इंजरी, कुछ ना कुछ हाँ. होगा. ठीक है. दैट आई कुड रिलेट क्योंकि मैंने अपने आप को ओवर एम्बिशन में वर्कआउट्स में पुश करके अपनी बैंड बजाई है, हाँ. बहुत इंजरी करवाई है. तो दैट आई Hmm. रिलेटेड, प्लस मैंने बर्नआउट्स करवाए Hmm. काम करके, दैट Yeah. आई रिलेटेड.
मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम के बियॉन्ड नहीं हाँ। जाने का है। हम्म, ठीक है भाई, मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम के बियॉन्ड नहीं हम्म, जाने का है। अब लाइफ में 3 चीज़ें आप मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम पे नहीं ओके। बिठा सकते। आप मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम पे मैक्सिमम ग्रोथ आता है ओके। आपका। वो एकदम स्वीटेस्ट स्पॉट है जिधर पे आपका मैक्सिमम ग्रोथ चल रहा है किसी ओके। एक चीज़ में। उसके बियॉन्ड गए तो आप एंटायरली बैंडवैगन से हम्म, बाहर हो जाओगे। फिर मिनिमम इफेक्टिव डोज़ लगाने लायक हम्म, भी नहीं बचोगे। तो उसके बाहर नहीं होने देना है अपने आप को। उसके बाद एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें करने की कोशिश करोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। फिगर आउट अभी लाइफ में क्या प्रायोरिटी माँग रही है? प्रायोरिटी माँग रही है कि ये ठीक है, वर्कआउट्स, फाइनेंस और ये हो गया। हाँ। मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ। मैं अपने बिज़नेस पे वर्क कर रहा था। मेरे फाइनेंसेस को फिर मेरे बिज़नेस को ऑटोमेट करने के बाद पहले मैं एमआरवी पे उसको चला रहा था, कॉम्प्रोमाइज़िंग अदर या। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। मैक्सिमम रिकवरेबल वॉल्यूम पे उसको चला रहा था, हम्म, बढ़िया ग्रोथ। Then I had to shift my priorities. No, I didn't even shift my priorities, but essentially I limited the amount of effort I was putting in. या। But I ensured since last 4 years I was putting in the minimum हम्म, effective dose कि वो या। maintenance mode पे रहे. So minimum effective dose is what puts something in a या। maintenance mode. वो growth पे नहीं है, हाँ। ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन वो या। नीचे भी नहीं जा रहा. वो चल रहा है minimum हम्म, effective dose पे. अब वर्कआउट्स हम्म, कर रहे हैं हम लोग, पहले 7 दिन कर रहे हैं, फुल ग्रोथ चल रही है, बढ़ते जा रहे हैं. नाउ लाइफ डिमांड्स अस टू फोकस ऑन आवर करियर या। एंड फाइनेंसेस, ताकि अब उसको तो थोड़े टाइम हम्म, ऐसे रख लिया, अब इसको वापस या। ऊपर लेकर जाना है. अब इसको ऊपर लेकर जाना है तो कहाँ कॉम्प्रोमाइज हम्म, करना है? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वर्कआउट्स में शायद उतना हम्म, टाइम नहीं मिले, एंड हैप्पीली या। लेट इट गो. ठीक है, मेंटेनेंस के लिए क्या करना होगा? 7 दिन वर्कआउट्स करते थे, 4 घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम्म, एटलीस्ट करना है. जिम में 3 से 4 दिन मैं हिट करूंगा ही करूंगा, चाहे यस। कुछ भी हो जाए. तो वो चल रहा है अब हम्म, मेंटेनेंस मोड पे. फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चल रहा है, दूसरी चीज आ गई, और बाकी रिलेशनशिप्स वगैरह सबको एमईडी के हाँ। आसपास रखा. अच्छा, एफर्ट्स आर वेस्टेड, बट दिस इज अ कंसेप्ट, कभी और या। डाइव इन करेंगे. जब बीच में कहीं प्लांट ओके। करा हुआ है, बीच में प्लांट करा हुआ है, तो ना तो वो ग्रो हो रहा है, ना तो वो हम्म, कुछ हो रहा है, जबरदस्ती क्लैश हो रहे हैं, वो ऑब्स्ट्रक्शन ही बन रहा है. तो बेस्ट पुट इट यस। हेयर ओनली, मिनिमम इफेक्टिव डोज के आसपास ही उसको ओवर अंडरस्टूड। कराओ. तो दिस इज लाइक स्टेयर हम्म, केस मेथड. बाकी चीजें ऐसे फ्लैट चल रही है मेंटेनेंस पे, कोई एक चीज ऊपर ऊपर जा रही है. फिर इसको अपन ने रेस्ट हाँ। कराया कि चल अब फाइनेंसेस में वापस अच्छा खासा हाँ। अपसर्ज आ गया है, और बढ़िया चल रहा है. आई एम हैप्पी हम्म, फॉर द टाइम बीइंग. आई वांट माय हेल्थ टू हम्म, ग्रो अगेन, राइट. अब मेरे को नया एम्बिशन है, नया टारगेट है. इस साल मुझे ये अचीव करना है, डेविल हाँ। सर्किट करना है, व्हाटएवर करना है. तो अब मेरे को इस पे फर्स्ट या। प्रायोरिटी लगानी है. तो ठीक है, उसको मेंटेनेंस मोड पे डालते हुए, ऑटोमेट करते हुए, इसको वापस से फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेंगे. तो वाओ ब्रो, दिस वाज या। सो माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि भाई विधान, तुझे मिल वही। गया यार सारे मेंटल मॉडल्स. नाउ दिस आई हैव बीन हम्म, वेरी माइंडफुल ऑफ ओके। सिंस लास्ट 2-3 इयर्स. मेरा एक टाइम आया था, मैं सेमी हाँ। डिप्रेस्ड बोलूंगा अपने आप को, हम्म, उस टाइम पे था. सब कुछ था लाइफ में. या। आई हैड एवरीथिंग. आई कुड टेक लॉन्ग ट्रिप्स, आई वाज टेकिंग लॉन्ग ट्रिप्स, 2-2 महीने हम्म, में ट्रैवल कर रहा था. आई कुड पार्टी हम्म, वेन एवर आई वॉन्टेड टू, एवरीथिंग. एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज या। नॉट फ्रीडम. दिस इज नॉट फ्रीडम बिकॉज आई एम अ स्लेव टू माई इम्पल्सेस. और ये तो फ्रीडम नहीं हम्म, हो सकता बिल्कुल भी. तो यू हैव हम्म, टू कंट्रोल योर इंद्रियां. एंड या। देन आई गॉट बैक टू, ठीक है भाई, मेरे को क्या अट्रैक्ट करता था, मैं वर्कआउट्स वगैरह पे आया. हम्म, और उस पॉइंट पर ही मैं कहीं ना कहीं ऐसा था, अपने दोस्तों को भी बोल रहा था कि यार बहुत हो गया. सो एसेंशियली हम ये डाउनवर्ड मोमेंटम नहीं कैच कर पाते ना हम्म, ऋत्विक, हम अपवर्ड तो कर या। लेते हैं कि टाइम पे उठ रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, या। मेडिटेशन कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ वर्कआउट. वो पूरा एफर्ट समझ आता है यार कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे या। जा रहे हैं. लेकिन फिर हम कहीं ना कहीं हाँ। एरोगेंट हो जाते हैं. ये मेरे को समझ आया कि कहीं ना कहीं एरोगेंट हो जाते हैं. ब्रो, तूने इतना कुछ कर लिया है ना, अब तू एक दिन मेडिटेशन मिस करेगा क्या होगा, एक दिन जिम मिस हम्म, करेगा क्या होगा, ऐसे करके चल 2 दिन मिस हो गया या। क्या होगा. वो हम कैच ही नहीं कर पाते कि कब वो मोमेंटम का ट्रू, कर्व ट्रू चालू हो कह। गया, और वो धीमे धीमे फॉल होने लग गया. 5 दिन जिम मिस हो गए, 12 दिन मेडिटेशन मिस हो गया, ये सब हो गया, हम्म, पार्टियां बढ़ गई, या। ड्रिंकिंग बढ़ गई, फुकाफाकी बढ़ गई. एंड देन यू कैच योर सेल्फ कि या। फक, ऑल द एफर्ट्स आर वेस्टेड, एंड आई एम डाउन एट अ वैली हम्म, अगेन. पूरा मोमेंटम छूट या। गया सारी चीज़ों का. तो मैंने बोला भाई, आई मस्ट या। कैच माई सेल्फ पहले से ही, कि ये इतना नीचे तो नहीं आना. तो दैट वाज द टाइम, मेरा पीक वो था जिसमें मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि यार मैं ऊपर जाता हूँ पूरा या। थ्रॉटल से. फिर एक टाइम के बाद फायर पावर बचता ही नहीं है अंदर की, और ऊपर हम्म, कैसे पुश करें. तो वो हम्म, नीचे आने लगता है. तो मैंने कहा इस बार मुझे पूरे थ्रॉटल को कभी या। लगाना ही नहीं है. मुझे सस्टेनेबली हम्म, ऊपर जाना है, हल्का सा ऑसिलेट हम्म, करते हुए ही, रादर देन या। दिस, राइट. हल्का सा ऑसिलेशन, बट अपवर्ड ट्रेंड पूरा का पूरा. बट थोड़ा ऑसिलेशन चलने देना है. 5 दिन काम कर, एक आध दिन या। जब बर्न आउट लगे, रेस्ट ले. 10-15 दिन हो गए, 2-4 दिन की ट्रिप लगा ले, या। कुछ भी कर ले, बट थोड़ा ही नीचे,
थोड़ा ही ऊपर, थोड़ा ही नीचे, Hmm. थोड़ा ही ऊपर, Yeah. ऐसे चलते रहे। भाई वर्कड phenomenally Yeah. well यार, बहुत। आई थिंक दिस इज अ, these two mental models I can count on for True, man. life। बाकी सब ऐड ऑन है, ये मेरे I बेस्ट है। would say so. One of my mentors, right? So I also actually like visited, like much like you're saying, right? Like this whole some train is going, bro, here. Okay. So what I'm saying is, so one of my mentors, right? So I actually visited Goa as well, and I went to his life mastery kind of workshop where I think it's very similar to what the Okay, 12-day course that you did. Mine was like a 3-day course, right? And yeah, so, what you're okay, talking about, I think that same journey, the same mentor also had, right? He started very early in his 20s, right? okay. He would start a business. What was his His name? name is Anish Singh Thakur. You would have heard about him, right? Yeah, yeah, yeah. Okay. So this guy, he started his businesses early in his 20s. He would build a big business. Hmm. It will again fall down, right? It'll crash, come crashing down. He'll start another business. Hmm. वो भी डूब जाएगा या कुछ fraud हो जाएगा उसके साथ या somebody will leave, some partner will give a they'll Hmm. dupe him or something, right? And now he is in a he says that he's in a place where everything is going well for him, right? And what I also feel is that much like what you're talking about, right? So when we had gone to this place, right, he was talking about you don't have less time, you have less energy, right? So what happens is, often what happens is, it's Energy. not so much about कि यार मैं कैसे करूं, right? Like a lot of people might think, looking at you, that okay, oh, he has a like this bed box also he has, and he's putting out content also, and he's doing a podcast also. How does he have so much of time? And or somebody might look at me, they'll think that okay, he's running an agency also, he's doing a podcast also, he's putting up reels also, or he's probably building a software company also. How does he have so much of time? Something is wrong, right? Or probably they have too much of money, right? This is what they think. But what I've realized is that what is important is to manage your energy, right? Much like what Yeah. I might not have even grasped the terminologies that well, but I relate to you 100%. That never so one thing which I always uh, right when I was a kid, right? So people used to say I'm a little on the lazier side. Okay, so I would say I'm a more lazier kind of a person, right? I wasn't a perfectionist. I was Yeah, yeah, nothing. I yeah. was like, I would say more on the lazy side. I was hardworking. I was smart also, but I was a little bit lazy as well. So I never really went Yeah. through through the fence, in anything overall, right? And what I realize now is that much like that whole concept of doing something 80%, 90%, right? That is very very important, because often what happens is, when once people want to start Yeah. their business, or they're preparing for an examination, right? For some competitive exam or something like that, they burn themselves out so much that they are not able to, or they start loathing doing that work the next day, right? Which is what you want to avoid completely. So most Yeah. people, whenever they be it working out, Yeah. be it meditation, be it business, so that's what they call taking baby steps, right? And taking baby steps, taking very equal length of steps, right? That's super crucial, because Sustainable. without that you're going to burn out. And end of the Yeah. day, the only way, like Alex Yeah. Ramosi also says this, right? That if you had all the time in the world, Yeah. you wouldn't fail. You fail because you stop, right? So that's one Yeah. thing. Anything you want to say about Stop. this? No, no, I Yeah, bang on yeah. agree. So yeah, man. So that's something that I felt. I Totally. also want to come back to a couple of things that you mentioned, right? That you talked about, like meeting some high performers. So during this whole content journey, I did see. I went through your YouTube. I don't know, it was like a couple of months back. You spoke to people like Ron Malhotra and folks like him, right? So who all have you Yeah. had the pleasure of meeting, and what have you learned from them? Who have you liked speaking to a lot? Whose ideologies do you resonate with the most? Sure. I think like no brainer. I enjoyed speaking with Okay. Ron the most. I think I legit think the podcast Hmm. was Yeah. so good. He is such a Yeah. deep thinker, very Hmm. clear thinker, has really thought through in his Hmm. life, and I super admire the courage that he Hmm. has, right? I I
रियली एडमायर पीपल जो पीपल प्लीजिंग Yeah. छोड़ते हुए अपना करेज दिखाते हुए ऑथेंटिकली सेल्फ हो रहे हैं, वेल नोइंग कि ये चार लोगों से Hmm. गालियां भी खाएंगे ये Yeah. करते हुए. And that I admire and try to Yeah. incorporate within me. Ron Malhotra, best Hmm. conversation I've had, and super nice Hmm. guy. Then I made a very good friend. He's Okay. Srijan Bhardwaj, very Hmm. good friend of mine now. Made friends through my podcast. We've traveled multiple Wow. times Hmm. together. We've met. Unki shadi mein, I met a lot more creators that he Okay. has, like Nishkar Yeah. Sharma and Rahul Bhatnagar, Yeah. Saurabh Bhatnagar. A lot of the folks I met. Unke through, I met a lot of people who are who are the agency owners of, say, people who run ads for Okay. Ankur Warikoo, and a lot of high Hmm. performance people who make you crazy Yeah. with their ads, right? I've met people who actually create the entire funnel and run all the Hmm. ads, who press the Yeah. button and craft the Hmm. button Hmm. essentially. So yeah, these kind of people I've met now with my own Yeah. content. Also, I've started meeting a lot Hmm. of people. People come into my Yeah. DMs. So recently, I even got someone who's a super big builder. He has a listed Okay. company. Uh, Young guy, very good guy. He reached out Hmm. into my DMs. He saw that, he told me that I love your content, the content that you're Hmm. creating. But I also figured out that you run a student accommodation venture. I am the promoter of this group, and I would love to connect with you and know more about your student Yeah. accommodation venture. Then we met Oh, at nice. Starbucks. Superb guy. And the opportunities Hmm. that you get when you start being seen, and मतलब essentially, यार, इफ यू हैव द स्किल्स कि आप आर्टिकुलेट वेल कर सकते Yeah. हो अपने आइडियाज, यू हैव अ Hmm. गुड पर्सनालिटी, यू हैव गुड Hmm. आइडियाज जेन्युइनली, एंड देन यू कैन पुट देम अक्रॉस करेजियसली ऑन द Yeah. इंटरनेट, you attract a lot of right Yeah. kind of people. तो that's something, किसी के पास भी अगर ये चीज़ें हैं, don't fuck the imposter syndrome, keep Yeah. working on it, do a lot of things, put yourself out there, be courageous. Courage is the only thing that will be Hmm. rewarded, and public speaking is something that has that has so much leverage. मतलब returns उसके बहुत ही what do we call, Yeah. exponential returns हैं यार, Yeah. simply put, no? Yeah. So I continue. I'm so optimistic of meeting nice Yeah. and nicer people. I love talking with them. I Hmm. love their energies. And Bangalore mein I met a lot of people, Delhi mein I met a lot of people, and I essentially figured out, yeah, these guys are not so much Yeah. different from me. They're not Hmm. different from me. And if they've गॉट दिस, आई कैन 100% डू. और सिर्फ हम इंटरनेट पे देख के रहते हुए कि ये नहीं Yeah. फील कर सकते ना यार, ये व्हेन यू एक्चुअली फील देयर Yeah. एनर्जीज, तब समझ आता है कि भाई ये तो मैं भी कर Yeah. सकता हूँ True. यार, कुछ भी ऐसा नहीं है यार स्पेशल True. इसमें. True. तो द बिगेस्ट लर्निंग तो मेरे लिए, मेरा पर्सनल बिगेस्ट एनर्जी इंस्पिरेशन तो यही था कि Yeah. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर Yeah. सकते Yeah. हो, Yeah. जब ये लोग कर True. सकते हैं तो. और उसमें ये भी था कि बहुत सारे लोग यार स्क्रीन के बिहाइंड बहुत Hmm. कॉन्फिडेंट रह जाते हैं. आधे से ज़्यादा लोग सामने मिलने पर दे हैव वेरी डल Hmm. पर्सनालिटीज. They are not the kind of vibe they project, and that's not the kind of person I would ever want to be. I want Hmm. to be कि भाई मैं जैसा दिख रहा होता हूँ, मैं कभी सामने भी मिल जाऊँ तो वही Hmm. दिख रहा हूँ. आई वर्क ऑन माई ऑथेंटिक सेल्फ. मेरा वो सेल्फ Yeah. बड़ा होना चाहिए, राइट? और मेरे को वो चैलेंजेस मिलने चाहिए कंटेंट के थ्रू. मेरा स्किन Hmm. थिक होगा. वो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे कंटिन्यूसली अब मैं थोड़ा Yeah. बना पाता हूँ मोमेंटम के साथ, विच इज़ कि मेरा की इंग्रेडिएंट उसमें ये था, इफ इट्स 70% गुड इनफ फॉर Yeah. मी, देन इट्स गुड इनफ, Yeah. पुश इट आउट. उसको अभी नहीं रोकने का, 100% नहीं Yeah. कर सकते तुम, है ना? तो दैट्स हाउ आई कीप ऑन गोइंग. दैट्स हाउ अच्छे लोग Hmm. अट्रैक्ट होते हैं. अ लॉट ऑफ ब्रांड्स लैंड ऑन माई पेज. माई अब तो काफ़ी सारे तीन चार ब्रांड्स एवरी Yeah. सिंगल डे land on my DMs, on my email. So many people want me to just be the person talking Yeah. for their brand. They'll give the scripts, they'll do the Hmm. editing part, everything they're willing to do, just come Yeah. and speak. That I figured कि भाई ये तो 200 300 के वालों के साथ Hmm. भी नहीं होता. The key I figured out was कि if you can communicate well, Hmm. articulate well, appear nicely, present yourself nicely, Yeah. carry अच्छा कर लेते हो, personality अच्छी है, Hmm. informative educational content, intellectual दिख लेते हो, everybody wants to Yeah. associate with you. True. True. At least every brand wants to associate True. with you. True.
तो मैंने कहा यार भाई ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था यार कि ये वाला भी एंगल Yeah. हो रहा हो सकता नहीं, है। नहीं. तो So बट can या you talk a little bit क्रेजी about यार, like क्रेजी दिस। that side of content creation, right? Like now that you're doing it full time, right? So a lot of people, they're very या curious because see, first of all, honestly, nobody should do content creation just for the heck of making money because that is not what it is about, right? That's या number one. But having said या that, like what does this sort of growth curve look for you even monetarily as a content creator, and where do you think you या want to take it, right, in the next say 1 year, 2 years, 3 years? या Yeah. Honestly, I don't have such Okay. concrete plans. I've never had very concrete Okay. plans for myself. I just go about doing Hmm. what I enjoy doing. Content creation journey may. I'm sorry, can you just repeat Yeah, the question so again? basically my Uh, question is, how do I see it 2 3 years? yeah, Wala so like done. my Yeah. main What question is else? that, what is it, what are the monetary benefits of being a content creator? Like you said that, brands are reaching Okay. out to you, right? So do you think it is worth it now that, you're putting in so much of time, so much of energy, right? You have about, I think, 50K followers in total on Instagram, right? So Yeah. how Yeah. does that look like for you Yeah. in terms of like the monetary aspect? Hmm. Okay, cool. Firstly, तो like you said, it shouldn't be your Yeah. monetary वाला। यार कोई भी चीज़ बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो सिर्फ ये सोच के कर रहे हो कि इससे मुझे पैसा आएगा, तो देयर इज अ Yes. सीलिंग टू इट, देयर इज अ लिमिट टू इट। आप किसी भी उस इंसान के साथ फाइट ही नहीं कर सकते जो उसको पैसे के लिए नहीं कर रहा है और Hmm. मजे आ रहे हैं उसको करने के लिए, क्योंकि व्हेन यू आर एंजॉयिंग इट तो आपको Hmm. लोड नहीं है ना कोई, आपको लग रहा है Yeah. काम ही नहीं किया कुछ, वो तो अपने आप ही हो रहा है, तो अपने आप ही सारी Yeah. मेहनत हो जा रही Yeah. है, राइट? तो माय की वाज़ कि मेरे को सब कुछ वो करना है जो मुझे एन्जॉय Hmm. आता है करने में। मुझे पसंद आना चाहिए वो चीज़ करना। आई डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग, आई डू अ Hmm. लॉट ऑफ रिसर्च, तो वो मुझे मज़ा आता था। आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, आई डू अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प, लर्न अ Hmm. लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प एज़ वेल, जो मैं क्रिएट कर Yeah. नहीं पा रहा हूँ कंटेंट, राइट? व्हिच तो विल इवेंचुअली कम आउट। मतलब मेरे को अंकुर वारिकू से लाइव में एक बार कनेक्ट करके समझ आया कि विधान, लेट इट बी योर ट्रम्प कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में आप Hmm. बहुत अच्छे हो, लेकिन ऑडियंस अभी आपको, ऑडियंस को आपकी रिसेप्टिविटी नहीं है, स्पेशली इस तरीके के Hmm. फंडामेंटल ज्ञान में, सेल्फ हेल्प वाले, जैसे हम लोग ये वाले पर मेंटल Yeah. मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ये Yeah. सब कर रहे हैं, राइट? तो एसेंशियली Hmm. अभी आप कौन हो? कुछ भी आप बन जाओ थोड़ा सा, तो वो सब कुछ Hmm. सुन लेंगे आपसे। तो देन आई फिगर्ड कि यार, व्हेन आई एम क्रिएटिंग फाइनेंस कंटेंट, अंकुर आल्सो टोल्ड मी कि विधान, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट कि वेदर और नॉट इट्स Hmm. वर्किंग आउट फॉर यू। मतलब हाउ टू पिवट एंड इंक्लूड self help Yeah. content as well. You've creating content you've been creating content for Yeah. 5 months, you've reached 40 50K, and that tells कि you're the जैसे बिजनेस में होता है ना, प्रोडक्ट Yeah. मार्केट फाउंडर फिट, audience is liking finance content from you, that you're able to Yeah. explain them well, and that they're liking on Hmm. your personality, and that you're good at Yeah. to them, right? So that may not Hmm. be your forte, but that's what people Yeah. liking, तो Yeah. double down on it फॉर द मोमेंट, स्टॉप ट्राइंग टू इंटीग्रेट। तो उसने भी मेरे को Hmm. काफी मेंटली वो सॉर्ट किया। फिर ऋत्विक, हम लोगों को ये भी लोड आता है कि यार हम, हमें पास कुआं तो नहीं है यार, आई डोंट हैव अ Yeah. वेल ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैं निकालता ही जाऊँ, Yeah. नेवर एंडिंग वो। उसको मेरे दो चीज़ों ने उनको दिमाग में सॉर्ट कर दिया। आई वाज़ वाचिंग दिस पॉडकास्ट ऑफ Hmm. सार्थक आहूजा, सच एन सच एन Yeah. आउटलायर ही इज, राइट? 24 साल की उम्र तक उसने सीए भी कर लिया, ये भी कर लिया, आईएसबी से एमबीए भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। प्लेसमेंट्स के टाइम डिच द प्लेसमेंट्स की मैं तो अपना Yeah. बिजनेस करूंगा। एंड इवेंचुअली फिर ही स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। ही वाज सेइंग इन दैट पॉडकास्ट कि भाई मैंने 90 डेज तक कंटेंट क्रिएट किया, एंड आफ्टर 90 डेज आई हैड नथिंग इन मी दैट आई Yeah. कुड टेल अदर पीपल। मेरा सब कुछ खत्म हो Yeah. गया था 90 दिन में। दैट्स व्हेन आई वाज ब्रूट फोर्स के तरीके से, आई हैड टू कंटिन्यूसली लर्न 3 hours एवरी डे टू बी एबल टू। तो मतलब वेल में अपना डालते जा रहे हो और फिर पोर Yeah. कर रहे हो, डालते जा रहे हो, पोर कर रहे हो। दैट हैज टू बी इन Hmm. सिनर्जी। मार्क मैनसन बोलता है, टॉम बिल्यू बोलता है, सार्थक आहूजा ने बोला, मुझे Yeah. काफी सही लगा। देन आई वाज वाचिंग फाइनेंस विद शरण का एक पॉडकास्ट, जिसमें वो बोल रहा था कि आज जितना भी मुझे पता है, जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे Yeah. 1% भी नहीं पता था। आई हैड टू कंटिन्यूसली लर्न Hmm. एंड देन Yeah. शेयर विद अदर्स। उसने मुझे भी बहुत ईज आउट किया, तो आई बिकेम समवन कि ठीक Hmm. है, मेरे को पसंद आता है इन्वेस्टिंग वगैरह, अब मैं जाऊंगा इसमें Hmm. क्रेजी डेप्थ्स में, और अब मैं इसको और बहुत सारा। तो अब अगेन एक बटन पे 5 काम होते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन Hmm. बहुत क्रेजी बढ़ती है, मेरी वो इन्फॉर्मेशन बढ़ती है, तो दूसरे लोगों के साथ मैं शेयर कर पाता हूँ, तो वो दूसरे Yeah. लोगों को भी पसंद आता है, उनकी हेल्प होती है। वो कंटेंट वो 100 लोगों के Hmm. साथ शेयर करते हैं, इन्फ्लुएंस भी बनता है, फॉलोअर्स भी बढ़ रहे Yeah. हैं, वो भी बढ़ रहा है, ब्रांड्स भी रीच आउट कर रहे हैं। तो एक बटन यार, दैट्स व्हाट आई Yeah. बिलीव इन, क्रिएटिंग लेवरेज, कि मेरे मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट Yeah. कैसे जनरेट Yeah. होता हो।
तो पसंद का कंटेंट होना चाहिए, Hmm. आप जो एन्जॉय करते हो वो करो, तभी सस्टेनेबल होगा। पैसे के लिए तो ना धंधा कर सक मेरे को पैसे का वैसे भी कोई लोड नहीं है, मुझे लगता है Yeah. अपने आप ही आ जाएगा वो तो। हमेशा से ही मैं इसका Yeah. फ़र्म बिलीवर हूँ कि वो तो आ Hmm. जाएगा यार, कुछ ना कुछ वैल्यू बनाने का आप Yes. सोचो बस। और मैं क्या एन्जॉय करते हुए कर सकता हूँ, वो मुझे बस Hmm. करना है। तो दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज़ आफ्टर एंड दैट्स व्हाट आई एम ऑलवेज़ Yeah. ऑप्टिमाइज़िंग फॉर इज़ कि मेरे को 5 एस्पेक्ट्स लाइफ़ के Hmm. सारे बढ़ाने हैं और मज़े Hmm. करते हुए बढ़ाने कि दिन खत्म होने में मुझे लगे कि यार विधान थोड़े काम तो कर ले यार, तूने कुछ काम ही Yeah. नहीं किया है। That's तो great, man. दैट That's the दैट right दैट्स mindset to have, दैट्स definitely. व्हाट आई That's the right ऑप्टिमाइज़ mindset to have, definitely. And या, since you mentioned that you're creating content around finance and investing and all, so you can probably या। position it like let me ask you the question like this: what are like the 5 things that you've learned about investing, which you think everybody should know, and they and it's something that they should know, and it is something that they should truly understand, right, from the fundamentals. Because kabhi kabhi kya hota hai, especially in Yeah, like finance and investing, yeah. I've seen that people don't like the real advice, right? People like the fancy advice. Yeah, bro, Yeah, they don't. Fuck, they they don't. don't. उन्हें ये चाहिए कि मैं Absolutely. अच्छा So, how can I yeah, put my money in a shit coin and that will go to 100x. They will never understand हाँ, that no, how कल to get good कल कैसे results. पैसा आएगा मेरे पास ये हाँ, बताओ बस। हाँ, 1 हफ्ते में मेरे को yes, रईस yes, yes, बनवाओ yes. बस आप। और अगर कुछ भी हाँ, है तो और मेरे को कुछ नहीं भी है तो सुनना मुझे आपको नहीं यार। सुनना. So what are those 5 things that you've learned that you नहीं want to सुनना। you want people to really truly understand? रियल एज़ फक वाली चीज़ें। येस, येस, येस। समथिंग Absolutely. Yeah. Thanks for asking this question. I really want a lot of these things for Mhm. people to understand. Pehla, I'm very much concerned about the current bull market and the fate Okay. of a lot of people that's going to happen Mhm. at some point in time. Irresponsibly bullish hona is such a stupid Yeah. thing to do. मल्टीपल थिंग्स 5 थिंग्स कोशिश Mhm. करता हूँ मैं बताने की। फर्स्ट, किसी भी तरीके के इन्वेस्टिंग को करने से पहले आपको अपना इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस Okay. सॉर्टेड रखना चाहिए। वो आपका ग्राउंड रूल है पर्सनल Mhm. फाइनेंस का, ठीक है? दूसरा, कोई भी पैसा इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स कहीं पे भी आप डाल रहे हो, वो ऐसा पैसा होना चाहिए जो 3 से 5 साल, क्योंकि ग्राउंड रूल ये आपकी नींद हाँ. नहीं खराब होनी चाहिए यार। दिस शुड ऑल जस्ट यू शुड ऑल बी यू शुड बी एबल टू डू दीज थिंग्स Yeah. एफर्टलेसली, ठीक है? तो दूसरा, कोई भी ऐसा पैसा आप मत इन्वेस्ट करो जो 3 से 5 साल तक आपको चाहिए Mhm. पड़ सकता है। ऐसा पैसा मत डालो यार कि आपको दिख रहा है तो 6 महीने में मुझे चाहिए पड़ सकता है, कोई मेरे पास फंड्स है ही नहीं, हो सकता है मेरी नौकरी भी Mhm. डाइसी चल रही है और मैं बस Mhm. इररिस्पॉन्सिबली बुलिश हो रहा हूँ। वो पैसा आप डालो ही मत, 3 से 5 साल तक Understood. वो हो सकता है। नो मैटर हाउ गुड द इकोनॉमिक आउटलुक एंड Mhm. एवरीथिंग लुक, पूरा लग रहा हो कि भाई एक भी ऑब्स्टिकल नहीं दिख रहा, सारे Mhm. टेलविंड्स हैं, पर तब भी रिस्क इज व्हाट यू Yeah. डोंट सी एंड प्रिपेयर्डनेस Yeah. इज की। तो डू नॉट इन्वेस्ट एनी मनी जो 3 से 5 साल आपको Mhm. चाहिए पड़ सकता है, ठीक है? ताकि कुछ भी हो जाए, आप Yeah. लोड नहीं ले रहे हो और आप लॉसेस में ना सेल Mhm. कर रहे हो, राइट? तो ये दूसरे नंबर वाली चीज़ हो गई इंश्योरेंस। दूसरा, वो पैसा मत डालो। तीसरा, बी वेल डाइवर्सिफाइड। अब आप इन्वेस्टिंग करने आ गए हो, आप सीधे देख रहे हो सलासर Mhm. का स्टॉक ले लेता हूँ, ये तो लोगों ने हाँ. नाम वाम बोल दिया है। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस इज समथिंग आई Yeah. एब्सोल्युटली हेट। मुझे आपको फिश देना पसंद ही नहीं है यार ऋत्विक। मेरे को इतने सारे लोग अभी भी पूछते रहते हैं, मेरे दोस्त पूछते रहते हैं मेरे को, ये बना, मेरे को कुछ बता दे, कुछ बता दे। तो पहले तो मैंने बहुत कोशिश करी Mhm. यार, देखो यार, आई एम नॉट द काइंड ऑफ गाय हु वांट्स टू गिव यू द फिश यार, Yeah. है ना? आई वांट यू गाइस टू लर्न हाउ टू फिश, Mhm. Yeah. राइट? तुम जिंदगी भर खाते रह पाओ Mhm. यार। मैं तुम्हें अगर बता भी दिया कि अभी ये ले Mhm. लो, तो तुमको कैसे मैं बताऊंगा कि अभी इसको बेच दो, और मैं कितनों को Yeah. बताऊंगा? और मेरे गोल्स अलग हैं, तुम्हारे रिस्क Mhm. एपेटाइट अलग है। मैं तो तब भी ना बेच रहा हूँ, हो सकता है तुमने कोई और पैसा डाला हो जो इतने टाइम। तो यू अंडरस्टैंड द फाइनेंस, यू अंडरस्टैंड द Mhm. फंडामेंटल्स, उसके बाद तुम खुद बहुत सारे बेसिक चीजें Yeah. फिट कर पाओगे। बट बेसिक्स किसी को समझने ही नहीं है, इंटेलेक्चुअल लेजीनेस Mhm. सबको दिखानी है। आप नाम बता दो, कैसे बता दो। तीसरा, डू नॉट Mhm. टेक टिप्स। टिप बेस्ड Yeah. इन्वेस्टिंग मत करो। मतलब अगर कोई टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अंडरस्टैंड द Mhm. रैशनल जो वो बंदा उसके Mhm. बारे में बता रहा है। अगर वो रैशनल नहीं बता रहा, तब तो भाग Yeah. जाओ उससे दूर। इसको तो कंज्यूम ही नहीं करना है। टेल देम, अंडरस्टैंड द रैशनल, अंडरस्टैंड द लॉजिक समवन Yeah. इज टेलिंग यू। वो लॉजिक अगर आप बाय कर पा रहे हो, तो डू अ लिटिल बिट रिसर्च अराउंड इट एंड देन Yeah. प्लेस योर फाइनेंसेस इन अ वे, ठीक है? तो तीसरा ये, टिप बेस्ड Mhm. इन्वेस्टिंग नहीं करनी, लॉजिक जानना है, समझना है, किसी भी चीज का क्यों आपको Yeah. पता होना चाहिए, है ना? ये मैंने किया है, क्यों किया है, Yeah. इसलिए किया है, बस, ठीक है? अब आप गलत हो सकते हो, कोई बात नहीं, यू विल Yeah. टेक योर लर्निंग्स, बट इफ यू डिडंट इवन नो Mhm. द व्हाई, तो आप तो सीख भी नहीं Mhm. पाओगे ना, पैसा भी बन गया उससे True. तो, राइट? व्हाई अगर आपको पता था और उससे पैसा बना, तो यू कैन एक्चुअली कम बैक टू Mhm. योर व्हाई, कि ये जो मेरा व्हाई था वो सही था Yeah. कि किसी और वजह से पैसा बना है। देन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये भी Mhm. चीजें हो सकती थी, कि ये Mhm. ऐसा हुआ, तो
ऑलवेज फिगर आउट, आपका स्टॉक बढ़ भी रहा है तो अंडरस्टैंड कि वो बढ़ Yeah. क्यों रहा है, राइट? इतनी बेसिक सी चीजें, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर Hmm. ग्रोथ दे रहा है वो, ये सब की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है, Yeah. अच्छी बात है। बट आपको पता ही नहीं है, आप देख रहे हो तो स्टॉक Hmm. प्राइस बढ़ रहा है और इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूँ। सो मेनी पीपल वुड प्रेफर येस बैंक ओवर एचडीएफसी, क्योंकि येस बैंक का शेयर प्राइस बढ़ रहा है, एचडीएफसी का नीचे Yeah. जा रहा है, जबकि फंडामेंटली एचडीएफसी इज सो सॉर्टेड, सच अ गुड बैंक, एंड फंडामेंटली येस बैंक इज एब्सोल्यूट शिट, Hmm. एब्सोल्यूट गार्बेज। उसको नहीं लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए। और सो या फोमो Hmm. नहीं करना है, स्टॉक प्राइस देख के काम नहीं करना है, अंडरस्टैंड Hmm. कोई भी चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, Hmm. टेक योर वाइज, ट्राई टू लर्न जितना भी आप Hmm. लर्न कर सकते हो। और अगर आप ये एफर्ट नहीं देना चाह रहे हो ना, देन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स Yeah. यार, कि डू अ नो ब्रेनर इन्वेस्टिंग, राइट? Yeah. फॉर मोस्ट पीपल हु आर अर्निंग वेल, Hmm. मतलब वेल को भी मैं इतना ईजिली भी बोलूंगा कि यार आप 50,000 से भी ऊपर कमा रहे हो, 70,000 से भी ऊपर कमा रहे हो, Hmm. आप लगाओ 20 20 एक हजार, 25 एक हजार जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, Yeah. एंड पुट इट ऑन एस आई पीज Hmm. ऑटोमेटेड, कि आपको देखना ही ना पड़ रहा हो। यू शुड नॉट बी वेस्टिंग योर टाइम सीइंग कि तुम्हारे नंबर्स क्या हो रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई तुम? 1 लाख तुम्हारा 1,25,000 हो Yeah. गया, या 5,000 तुम देख रहे हो, 5 लाख 5,500 हो गया Hmm. भाई। क्या कर रहे हो? ये 500 रुपए बढ़ने के लिए क्या Yeah. देख रहे हो, या 20,000 रुपए बढ़ने के लिए क्या Hmm. देख रहे हो उसको? अनलेस इट्स अ वेरी हाई रिस्क Yeah. स्टॉक, जो तो आपको होना ही नहीं चाहिए उस स्टॉक में, पहली Yeah. चीज। तो एक ये हो गया। मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड वे में Yeah. बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने वो नहीं बताने नहीं, की। this bang on, bang on. बट या Yeah. यू कैन स्टॉप मी वेर एवर No, यू no, it's वांट टू, bang on, man. It's है ना? bang on. एंड फिफ्थ, yeah, and I broke my momentum, but I had something very important to Mm-hmm. plug in here. ठीक है, ऑल्सो कीप इट वेरी Yeah. वेल डाइवर्सिफाइड। अगर आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स Mm. आपने भर लिए हैं, जो भी नाम चल रहा है उसका, जो भी पहले बढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गोइंग अप वर्सेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग Yeah. देम डाउन इज Yeah. फार लेस। ठीक है, जो ऑलरेडी रन अप Mm. दे चुके हैं, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन Mm. इज नाउ हायर। रेलवे स्टॉक्स, पावर Yeah. सेक्टर स्टॉक्स, ये अब बेसिक लोगों को और नहीं समझ आता। ऑर्डर बुक में कोई प्रोजेक्ट आना डज नॉट ट्रांसपायर इनटू नेट प्रॉफिटेबिलिटी में वो Yeah. चीज आना, Yeah. राइट? क्योंकि मार्जिन ही बहुत कम है उधर पे। एवेंचुअली जब वो आएगा तो फिर तुमको लाइन में लगते रह जाओगे और बेच नहीं Yeah. पाओगे अपना सामान, True. अपना स्टॉक बेच भी नहीं पाओगे और लगे रह जाओगे आप True. सर्किट पे। लार्ज सारा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा करो। मैं तो इतना रिस्क मिटिगेशन करता हूँ, इतना समझ Mm. के कर रहा होता हूँ चीजें ऋत्विक, कि पहले मैंने सारे अंडरस्टैंड करे Yeah. फंडामेंटल्स। मैंने पूरा हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट हाँ. क्रैशेस देखा 100 साल का, राइट? आप जाकर देखो भाई कि मार्केट कैसे ऊपर नीचे जाता रहता है, लेकिन एवेंचुअली Yeah. ट्रेंड अप कर रहा है। ट्रेंड अप क्यों कर रहा है? कि कभी आप एकदम ऐसे वो भी ना हाँ. घबरा जाओ कि भाई ये मार्केट पूरी तरह से डूब गया तो मैं क्या हाँ. कर लूंगा, है ना? पूरी तरह से कैसे डूब जाएगा? जब गवर्नमेंट और प्रिंट Mm. करेगी, तुम्हारी इकोनॉमी की कंपनियां और प्रोडक्टिविटी और केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर Mm. करेंगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, आबादी बढ़ रही है, उनको खाने के लिए Mm. ज्यादा सामान चाहिए, तो कंपनी वो सामान Yeah. ज्यादा बनाएंगी। गवर्नमेंट अगर प्रिंट कर रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वो Mm. जीडीपी बढ़ेगा। तो रिलेटिव टू दैट इवेंचुअली स्टॉक मार्केट्स विल Yeah. हैव टू कैच। और करेंसी अगर डिवैल्यू हो रही है तो कंपनियों के एसेट प्राइस और वैल्यूएशन Yeah. अप्रिशिएट हो रहे हैं, और उनके रियल इन्वेस्टमेंट्स में अगर पैसा है, रियल एस्टेट, Mm. ये सब कुछ, तो इवेंचुअली उनके वैल्यूएशंस और प्रॉफिटेबिलिटी में Yeah. भी दिखेगा वो। और वो दिखेगा तो भाई वो नीचे भी आ जाएगा, तो इवेंचुअली इट विल हैव Yeah. टू कैच अप विद Yeah. दैट, राइट? तो बेसिकली इट विल कंटिन्यू टू ट्रेंड अप जब तक गवर्नमेंट प्रिंट Mm. करती रहेगी। ये तो बेस लाइन है। तो आपकी ये तो फटी नहीं चाहिए कि अब डूब गया, अब तो हाँ. डूम्सडे आ गया, गए। इसीलिए 3 से 5 साल तक जो पैसा चाहिए वो डालो मत, क्योंकि आपको ये पता है कि 3 5 साल में Yeah. तो ये आ ही जाएगा, वापस आएगा ही आएगा, कभी ऐसा हुआ True. ही नहीं है। और पिछले 25 साल से तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स हैव अंडरस्टूड अ लॉट वेल कि मॉनेटरी पॉलिसीज क्या Mm. करनी है एट प्लेस, कैसे लिक्विडिटी इंजेक्शन करनी है, क्या करना है कि भाई स्टॉक मार्केट्स गो Yeah. रोरिंग अगेन, राइट? इंटरेस्ट रेट्स के साथ कैसे खेलना है, Mm. क्या नहीं करना। स्टडी द स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, कि वो नीचे Mm. आता ही जाता है, कभी भी आ सकता है नीचे, लेकिन इवेंचुअली रिकवरी Yeah. होती है। तो एक्सपेक्ट अ टाइमलाइन कि चला गया तो 3 4 साल में आ Mm. जाएगा। हर केस में आप इस तरह से पोजिशन होने चाहिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज 1 लाख हर महीने का कर रहे हो, मार्केट Mm. ऑल टाइम हाई पे, तो आप सत्तर Yeah. हजार करो बस, राइट? और मार्केट बहुत नीचे चल रहा है, 1 लाख रुपए आप करते हो बेस लाइन, तो अब 1,50,000 करो। उधर जो बचा है अब इधर पे करना चालू करो। साइडवेज चल रहा है तो 1 लाख का 1 लाख जाने दो। बिल्कुल. कोई भी सिचुएशन हो, आपकी जीत है बिल्कुल. भाई। मेरे को खुशी है किसी भी तरह से ऊपर जा रहा है, वाह यार मेरा बढ़िया पैसा बढ़ रहा है और मैं थोड़ा Yeah. और लगाते जा पा रहा हूँ। और नीचे जा रहा है तो मैं बढ़िया यार, मेरे पास काफी इकट्ठा हो गया था, मेरे को डालने का Mm. मौका और मिल रहा है। और डाल भी मैं हमेशा रहा हूँ कि मेरे को रिग्रेट भी ना Yeah. हो रहा हो कभी कि यार तब कर देना था, यार ऐसा कर देना। हर टाइम ही बिल्कुल. डालो भाई, आप हर तरह से खुश होने बिल्कुल. चाहिए आप। हर तरह से इजी वाइब रहनी चाहिए, Mm. ठीक है यार, जो भी है मेरे को रिग्रेट्स Yeah. नहीं है कोई। इधर वेज नहीं नहीं, बढ़िया चल true रहा है। man. I think all the तो और उसके points, बाद all the डाइवर्सिफाई। points are so bang on. हाँ, So there's, so you, do you know about like Ray yeah. Dalio and his book Principles? Yeah, bro, Principles you would have read, absolutely, right? Principles absolutely. have you read?
So हाँ या यार नॉट एंटायरली बट काफी सारा उसका सुना है, हम्म काफी सारे उसके क्लिप्स देखे हैं, काफी ऑडियो बुक में यस इंटरवल्स इंटरवल्स में मैंने यस उसको सुना है और थोड़ा उसमें बहुत रीड करा एक्चुअली है। क्या यस। है लाइक द वे यू आर सेइंग अबाउट लाइक diversification and the markets, right? So just to add on to what you're saying, या like what I have realized personally, like being into like या trading and investing and all, number one cheese, as you mentioned, the stock markets are strongly linked with the growth of a nation. ठीक है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता अगर मान लो if India is wanting to become a super power, ऐसा हो ही नहीं सकता that the stock market will not do well over a long period of time. ठीक है, ups and downs तो आएंगे. या ओवर अ Yeah, लॉन्ग पीरियड ऑफ that's the टाइम इज द main की। thing. या Number two is that what I've like realized is that you need to be diversified, right? Uh, तीसरा हो गया कि you need to have patience कि अगर कभी market नीचे आ रही है, actually that's the perfect time to put in more money, right? Especially if it is good quality stocks and good quality companies. Like one thing that now recently which has been happening is like the crypto market has been trending. Now people didn't put money when the crypto market was down and when it had started picking up back again. Abhi, because now या it's already late, या Ethereum, Bitcoin, they're all 30-40% up. Now again they'll start putting in money, which is wrong, या right? Which is wrong because now you're again या late. अभी तक तो फिर भी स्टिल हाँ, इट्स अ गुड टाइम। ठीक है, अभी तक तो फिर भी, एंड अभी भी पीपल आर नॉट गोना no. स्टार्ट They पुटिंग इन will द do it when मनी। it's like व्हेन विल देयर आम $100,000. जनता रिटेल इन्वेस्टर स्टार्ट कमिंग? when they start seeing articles bitcoin reached its new Yeah, all time yeah. high, that's when the retail Hmm. investor का पूरा पैसा डालने वाला सीन, because retail investors are मतलब मासेस ना, ब्रॉडली जो सारे मिलकर हाँ, डिसीजन मेकिंग करते हैं वो सबसे बिल्कुल. गड़बड़ करते हैं, राइट? और उन लोगों को चाहिए होता है बड़ा वैलिडेशन कि यार नहीं 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 अभी नहीं मान सकते, हो सकता Hmm. है वापस नीचे गिर गए, अभी तक तो यही चल रहा है, अभी Yeah. भी वापस गिर सकता है, कुछ नहीं, ऑल टाइम हाई को Hmm. ब्रीच कर दिया। Nah. फक, दैट्स सम Yeah. वैलिडेशन, एंड दैट्स, अब भाई रिस्क जितना आप ले रहे होगे उसके हिसाब Hmm. से रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप वैलिडेशन ये ले रहे हो, ये 300% ऊपर Hmm. रिटर्न दे चुका है, तो मतलब Yeah. वैलिडेशन मिल गया भाई इतना। अब तो आपका डाउनसाइड बहुत बिल्कुल, ज्यादा बन गया है बिल्कुल. ना। तो बस हाँ, ये Yeah, यही गड़बड़ that's करते हैं यार लोग, so. क्रिप्टो में दे विल स्टार्ट कमिंग। Bilkul, that's exactly the problem. And the final thing is that he also talks about like diversification. So what he says is that in his Bridgewater Associates, which probably I think the most successful hedge funds, right? So what they used to do या was उनने जो भी हेज सात फंड या आठ asset classes में invest किया, all of them had a connection or like a I would say correlation of like less than I don't know like correlation was almost nil there, right? So that is what it means to या be diversified. कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिफरेंट सेक्टर्स, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, या तब जाके एब्सोल्युटली, है व्हेन और यू वो कैन भी ग्रो. कितने परसेंटेज एलोकेशन किधर कर रहे हो। Exactly. So I think या once people understand this, not that एब्सोल्युटली। it's not so difficult, making money in the stock market. And the key thing is again this या patience and good राइट, quality investing. That's the main thing. पेशेंस। So yeah, Vidhan. So I think we are coming towards the end of the podcast, right? So we have a fun rapid fire Cool. round soon after this. But I would want to hear from you what is like the one final sort of piece of advice you would want to give people in general, be it about business, life, content, anything. Just to summarize what you have talked about. Cool. So, the primary piece of advice, at least that works for me, and I would really want everyone to understand is try a lot of things. Predetermined रास्तों पर अभी चलना Yeah. बिल्कुल भी safe नहीं है. I think मैंने trying to take the path of least resistance and least risk could actually end up being the most risky. So try a lot of different things. Try figuring out who you Yeah. truly are, what your interests align with. आपको जो भी genuinely पसंद है आप उसका Hmm. वैल्यू डिलीवर कर सकते हो सोसाइटी में। आज की डेट में इतनी नीड्स हैं, यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जस्ट बी गुड एट इट। और Yeah. हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है, राइट? सो ट्राई डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बी Yeah. अ लिटिल अनकन्वेंशनल एट टाइम्स। सेफ रहते हुए भी रिस्क आप लेते रह सकते हो, और वो रिस्क में आप ट्राई करो, अपने आप को Hmm. समझो, अपने टैलेंट समझो। पब्लिक स्पीकिंग Yeah. ज़रूर करने का ट्राई करो और सीखने की कोशिश करो। ट्राई गोइंग टू टोस्ट Yeah. मास्टर्स, दिस विल गिव यू एन एज like nothing Hmm. else in the coming times more Hmm. so। और हमेशा से काफी वो रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। हर Yeah. किसी को बहुत डर लगता है जिसकी वजह से उससे बाहर बहुत कम लोग आ पाते हैं, और हो सकता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग ना सिर्फ Hmm. भीड़ के अंदर ही रह जाएं। आप अगर बाहर आते हो तो यू विल बी वेरी मच Hmm. रिवॉर्डेड फॉर दैट। एंड या पब्लिक स्पीकिंग, ट्राई डिफरेंट Yeah. थिंग्स, एंड या गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर। अगर आप जॉब सिक्योरिटी वगैरह कुछ चेस कर रहे हो तो अंडरस्टैंड जॉब सिक्योरिटी के डीप डाउन
आप एक्चुअली फाइनेंशियल सिक्योरिटी चेज कर रहे हो, और जॉब सिक्योरिटी आज की डेट में आप नहीं बची हुई है, इट्स अ मिथ. Yeah. Figure out how to build your own financial security and you will be sorted. Try chasing your interests. Perfect. That's perfect, man. That's a beautiful way to summarize it. I completely I resonate with you on like all levels, like Joby, like whatever we have spoken about today, right? So I think I really connect with you on all of this. Like we haven't, I think, Yeah. spoken about of these things like when we have chatted in the past, but yeah, definitely, man. I resonate with everything that you've said. So yeah, are you ready for your Awesome, man. rapid Yes. fire? And It's Brofist like a for very yeah. agreeing on all of that. Yeah, man, absolutely, absolutely. Bang on, bang on. So, okay, so the first question is, which is, your favorite book and what is one book you would recommend anybody read? My favorite book, yaar, I hate questions that tell me to just say one favorite book, one favorite song, one favorite movie. बहुत टेंशन दे देने वाली बात है यार ये. तो Nobody tells me one favorite book. All of my guests tell me 10 books, yeah. so you can go ahead. It's just a ask you a Yeah. question. So, but Yeah. I can say it in a lot of different categories. I think The Secret is the book जिसने मेरी Okay. लाइफ चेंज करना स्टार्ट करा, जिसने मुझे रियलाइज करवाया द पावर ऑफ बुक्स, कि भाई बिकॉज इट ऑल्टर्ड द वे आई वाज Hmm. थिंकिंग अबाउट थिंग्स. द पावर ऑफ नाउ वाज द बुक जिसने मेरे Hmm. को काफी रियलाइज करवाया कि आई डोंट हैव नेसेसरली अ स्विच ऑफ बटन ऑन माय ओन माइंड, which Hmm. essentially makes me not Yeah. in control of my mind and my mind in control of me. तो Hmm. वो पाने का प्रैक्टिस भी करते रहना Yeah. इज इम्पोर्टेंट. द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ने मुझे Hmm. बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई. जैसे रॉकस्टार वैल्यूज वाला वो जो था, Yeah. कि आपके मेट्रिक्स क्या हैं, उसके बेसिस पे आप जज Hmm. करते हो, आप फेलियर हो सक्सेसफुल हो. आप मेट्रिक्स चेंज कर सकते हो एंड यू कैन फील अ लॉट बेटर Yeah. अबाउट योर सेल्फ. एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट क्या Yeah. वैल्यूज आप लेते हो, क्या आपके लाइफ के वैल्यूज हैं. Hmm. सिद्धार्था Hmm. टोल्ड मी अ लॉट अबाउट कि भाई मैं लोगों को ज्ञान बड़ा चिपकाता हूँ, और मैंने जो लर्निंग्स ली ना, मैं बड़ा इम्पोज करता हूँ, यार Yeah. प्लीज तू मत गलती कर, वो मत गलती कर. बट फिर वो बुक्स हम के पढ़ के मुझे Yeah. समझ आया कि नहीं यार, इंसान खुद की गलती तो करेगा ही. यू Yeah. कांट बी सो मच आफ्टर Hmm. हिम. तो सिद्धार्था True. वाज अगेन अ वेरी गुड बुक. रिच डैड पुअर डैड एंटर्ड द टुक मी इनटू द Yeah. गेट ऑफ फाइनेंस, और वो गेट खोलने के बाद मैं खुद अब Yeah. बहुत सारे गेट्स खोल Yeah. पाता हूँ. राइट. नवल ने काफी कंट्रीब्यूट करा है. तो इट्स जस्ट Yeah. पिकिंग अप नगेट्स फ्रॉम एवरीवेयर. बट कमिंग बैक टू क्या मैं लोगों के लिए, ट्यूजडेज विद Hmm. मौरी, वाओ, उसने मेरे को लाइफ में पैशनेटली लीड करना सिखाया है Hmm. यार. कि Really good book. मरते टाइम भी ऐसा पर्सपेक्टिव हो Yeah. सकता है जैसे जीने वाले लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं है जो फुली एबल्ड है. तो ये सारी बुक्स ने मुझे बहुत माइंडसेट से Absolutely. लेकर लाइफ को 30,000 फीट व्यू से दिखाया, जिससे मैं अब अपने जो चॉइसेस ले पाता हूँ वो Hmm. पूरा 30,000 फीट व्यू से ही ले पाता हूँ, कि मैं रिग्रेट्स भी बुढ़ापे के मिनिमाइज कर रहा हूँ, फिटनेस को भी कैसे अच्छे से रख रहा हूँ, पसंद की चीजें भी कर Yeah. रहा हूँ. एक जिंदगी है, मस्त जीऊं. और साथ साथ ये नहीं कि Yeah. मस्त मतलब पार्टी कर लो और ये फूक लो और ये हो लो वो हाय हो लो. Yeah. इट्स एंजॉइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ Hmm. लाइफ. तो रिकमेंड करना चाहूँ अगर फाइनेंस के Yeah. ऊपर, तो मैं कहूँगा True. बेसिक बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी. वो थोड़ी सी ब्लर भी दिख रही है इस जगह पर. द Hmm. साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल रियली नीड Yeah. टू रीड एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको बेसिक समझ आ पाएंगे उस बुक में, और अच्छी तरह से Hmm. लिखी हुई है वो बुक, राइट. Hmm. और सटल आर्ट ऑफ Yeah. नॉट गिविंग अ फक भी पढ़नी चाहिए. द पावर ऑफ नाउ, अगर आपका दिमाग बहुत Hmm. इंसेसेंटली चलता रहता है, आपको लगता है बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, वो पढ़ो आप. Yeah. और दिमाग में अगर आप खुद से Yeah. गड़बड़ बातें करते हो, खुद को सेल्फ लिमिटिंग टॉक्स करते हो, तो द Hmm. सीक्रेट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ो. तो मतलब मेरा ऐसे प्रिस्क्रिप्टिव रहता है ऋत्विक ना, Hmm. कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, तो इस Yeah. प्रॉब्लम के हिसाब से ये तुझे पढ़ना उसके चाहिए, हिसाब से रादर देन अ जेनरिक वो ना. या लाइफ में तू ये ट्रू अचीव करना चाहते, जैसे मेरे को ऐसा या लगता है कि बुक्स चूज करने के पहले यही है कि लाइफ का सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या चल रहा है, उस हिसाब से कर लो. एक टाइम पे मेरा नेगोशिएशन भी हाँ चल रहा था कि यार मेरे को ना नेगोशिएशन में बड़ा वो आता है लोड, तो हम्म, मैं कैसे उसका बाप बन जाऊं. तो फिर आई फिगर्ड आउट गूगल से लिस्ट निकाल के, एंड नेवर या स्प्लिट द डिफरेंस वाज द बुक दैट जिसने द मुझे डिफरेंस क्रिस वॉस की जो बुक है, जिसका आधे पढ़ने में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. या अक्सर आप प्रॉब्लम समझो, उसके अराउंड बुक्स बेस्ट ढूंढो, हो सकता है पूरी भी ना पढ़नी पड़े, हो जाए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. या कभी वापस प्रॉब्लम आए तो फिर बाकी की पढ़ लेना. बिल्कुल तो बिल्कुल या इट हैज टू बी प्रिस्क्रिप्टिव, आई थिंक. ट्रू लोड नहीं लेना लेकिन बुक्स का, मैं या रिकमेंडेशन. दैट्स ट्रू मैन या आई थिंक गो बस अहेड मैं गो अहेड या टेल फटाफट मी इसको बोल रहा हूँ कि लोड नहीं लेना कि कोई बुक उठाइए तो उसको पढ़ना ही है. ऑथर का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ग्रिप्ड रख पाने का, जितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर वो नहीं रख पा रहा है, तो लीव दैट बुक, जब तक कोई बुक आपको या एक्साइट नहीं कर देती एकदम कि फक, ये क्या पढ़ लिया इसने, तो मेरी लाइफ बदल दी.
मतलब ये तो मैं काश ही मुझे पहले पता होता, तो Hmm. इस तरीके के वो यूरेका मोमेंट्स आने चाहिए बुक्स Yes. पढ़ते हुए। बट ओवर टू यू, व्हाट वी सेइंग। बिल्कुल। No, no, Bilkul, man. I think I resonate with you. I think, and I would say, like I've said this in like the previous podcast as well, that books are probably the best ROI of your money, right? We talk about Bitcoin, we talk about stock market. You buy a book for 500,000 bucks, and it changes your lives in so एब्सोल्युटली many भाई। ways that you should invest a lot of your time and energy in actually reading books, right? So you can see, like I every morning I make it a point, like या regardless, like you said now, या कि 75% 80% करना चाहिए। तो मैं हो सकता है हाँ, 100 पेज नहीं पढ़ रहा हूँ दस मैं, लेकिन दस मैं दस दस पंद्रह दस पेज तो पढ़ ही बस लेता वो हूँ दिन दस में, का राइट? टाइम सो यार, और दैट्स वैसे भी वो ग्रेट, या 10 को क्रॉस करने के बाद पता नहीं चलता फिर 40 कब हो गए कि 25 कब हो गए। वो 10 तक ही वो फ्लो बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड डू कॉन्शियसली। सो द सेकंड क्वेश्चन इज लाइक I want to व्हिच plug in one more book. व्हिच आर योर I फेवरेट want to plug मूवीज in एंड one यू more जस्ट वांट book to say before we get to the okay, second question. This is The War of go Art ahead. by Steven Pressfield. हर क्रिएटर, हर क्रिएटिव इंसान को पढ़नी चाहिए। Okay. This is not to be confused with the book Hmm. by Tao Lao Tzu, whatever his name, Sun Tzu. Sun Tzu. Okay, Not to be हाँ हाँ confused हाँ, with that. That book is yeah, The War Sun of Tzu, Art. नहीं नहीं नहीं, that book is The Art of War. हाँ, I am talking about The War of Art. Art of War, I'm talking about The War of Art. War of Yeah, Art, by okay, Steven Pressfield. okay, I भाई haven't read that, डेफिनेटली डू, यू विल लव दैट। understood, पक्का यू विल लव इट। okay, got it. Perfect, man. I will, because it sounds like an interesting book as सुपर। well. Anything with a या keyword war या is एंड typically दिस good इज द वॉर only. ऑफ आर्ट ऑफ ऑल योर क्रिएटिव So, परस्यूट्स, एंड यू आर ऑल इन ऑन yeah, क्रिएटिव परस्यूट्स, एंटरप्रेन्योरशिप इज hmm, क्रिएटिव। yeah, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। No, no, यार, पक्का। I'll definitely, that's one new एंड recommendation लेट that मी I've नो gotten. हाउ यू So लाइक इट। definitely will read it. Yeah, yeah, man, absolutely, absolutely. The second question is, which are your favorite movies, and which is, one movie you would recommend people watch today? ओके। Yeah. आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि मेरे दिमाग से ना मूवीज निकल ही जाती हैं पूरी। मैंने इसको बहुत ज्ञान में ना Okay. रखते हुए ना, अगर मैं बताऊं कि मेरे को थिएट्रिकल इंजॉयमेंट कौन सी मूवीज में ज्यादा आया है, तो सबसे पहली तो मुझे हाँ, दिमाग हाँ, खराब कर देने वाली मूवी वो थी, रेडी प्लेयर वन, दैट आई वॉच्ड इन 3D, वो mhm, आई मैक्स, प्रॉपर 3D आई mhm, मैक्स। एंड mhm. वाओ यार, व्हाट अ मूवी। Yeah, उसके बाद yeah. बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट मुझे तो ये एनिमल भी बड़ी मजेदार लगी है। और अच्छा, क्योंकि that's इट इट्स interesting. या That's interesting. क्योंकि वो बहुत सारे मेल फैंटेसीज पे बनी है, एंड आई आई डोंट पुट अप अ लॉट ऑफ मोरालिटी, सारा मोरालिटी असाइड, आई थिंक Mm. मैं तो उस पर भी डिबेट कर सकता हूँ बकचोदी में। लेकिन हाँ, मोरालिटी असाइड, Yeah, आई थिंक इट वाज अ yeah. फैंटास्टिक थिएट्रिकल वॉच। Mhm. मुझे तो मजा आया उसमें। और Okay. लेकिन हाँ, लर्निंग्स वाइज अगर बताएं तो Interesting. मुझे एक तो स्टॉक मार्केट्स पे द बिग शॉट काफी पसंद आई है। यार मैं ना थोड़े नाम मेरे को याद नहीं आ Hmm. रहे। मैं वंडर, वंडर इज अ मूवी आई वुड से टू इमीडिएटली वॉच समवन। ये Wonder is छोटा that बच्चा, with that या 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 little या kid, वो वाली? हाँ, एस्ट्रोनॉट, छोटा फेस बच्चा ना? डिफॉर्मिटी, Yeah, 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 that's a good one. दैट वुड बी अ Absolutely. मूवी मैं इमीडिएटली Yes, कहूंगा yes. किसी को भी देखने के लिए। गुड विल हंटिंग इज अनदर गुड मूवी, शॉशैंक रिडेम्पशन एंड ऑल, ये सब हो गया। बट आई थिंक Hmm. मूवीज में मुझे Hmm. कभी कभी इंस्पिरेशन इक्वली बहुत पसंद है। मेरे को नाइकी का एयर बहुत अच्छी लगी मूवी, वो जो अभी आई थी, जिसमें वो जॉर्डन को Okay. कैसे उन्होंने, Okay. Haven't ओके, watched that. वो वो एक नाइस है, मजबूर थी। अच्छी मूवी है। Hmm. Okay. सो या दीज आर सम मूवीज। Hmm. बट मैं उसको या तो एकदम फन के Hmm. लिए देख रहा होता हूँ या इंस्पिरेशन के लिए देख रहा होता हूँ। हाँ, लव स्टोरीज में नहीं Yeah, देखता। that's good. Acha, that's good, man. That's good. That's good. So my other question for you is, so if you had any superpower, right? Any kind of superpower, कुछ भी superpower होती, what is like one superpower you would want to have? One superpower I would want to have is, I think, I don't know, man. Can you give me or वो options, please? So, like most people that I've Yeah. spoken to, right? It's just been a common trend with the people I've spoken to. They all want to sort of, उनका क्या है कि they want to know what is the other person हाँ, thinking, right? Or they want to manipulate anybody in the हम्म, world. मतलब manipulation or think हाँ, understanding what the other person thinking. That is what I've yeah, heard consistently. वो main theme रही है. अभी that is just one hint I can give yeah, you.
But उसके अलावा I haven't got like a lot of ठीक है, different आई different थिंक kind of आई हैव माई superpowers. ये mainly आई जो थिंक है. आई हैव माई आंसर। ये वाली चीज तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा, वरना Okay. इतना एक्साइटिंग लाइफ का गेम ही पूरा स्पॉइल हो जा रहा है। मुझे तो ये चैलेंज ही बहुत पसंद है कि आई Yes. ड्राइव पीपल टू द आउटकम दैट हाँ. आई डिजायर विदाउट नोइंग व्हाट्स गोइंग इनसाइड Hmm. हिज हेड, बट ट्राइंग टू गेज थ्रू अदर Dead, थिंग्स dead. कि इसके में क्या चल रहा होगा, वेदर नॉट ही इज कन्विंस, इसको मैं क्या Yeah. एग्जैक्टली exactly बोलूं क्या नहीं करूं। तो आई थिंक दैट्स अ गेम आई लव प्लेइंग। तो ये तो चीट कोड मुझे पसंद ही नहीं है ना। Yeah. बट व्हाट आई वुड वांट Yeah. पर्सनली इज to to have to be very energetic a lot of times, be Hmm. passionate about a lot of things, Yeah. uh, and get to live matlab na quite long while taking a lot of risks, अच्छा. adventure wala risks bhi, but I Hmm. get through them fine. Yeah. And yeah, I just get to live a Yeah. long and a long life जिसमें मैं अपने लेसन्स क्विकली लर्न करता रहूँ और Yeah. एफर्ट डालते रहूँ अपने हेल्थ को और एनर्जीज को ऑप्टिमाइज रखने में। आई थिंक Hmm. बाकी तो मैं सब फिगर आउट कर लूंगा, कहाँ कैसे मजे ढूंढने। लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ, एनर्जेटिक Yeah. लाइफ। That's so that guy, you know, या Brian Johnson. So he is like he's bro, like he's literally saying that you have to question that you know this या whole death thing. So I'm like, shit, ट्रू man, what's ट्रू going ट्रू on in the world, right? And with probably with this या Neuralink and all coming with what Elon Musk is doing, who knows, bro? Like your dreams will या come ब्रो true, bro. आई You have आई one एम वेरी superpower that'll come ऑप्टिमिस्टिक true. अबाउट इट यार। मैं मेरे को 150 साल तो जीना है यार। मतलब मैं Yeah. इन्फिनिट तो नहीं बोल सकता वरना बहुत बोरिंग हो अच्छा. जाएगा, बट 150 साल तो मैं जीना चाहूंगा यार। मेरे को लगता है Yeah. 150 साल तक तो मैं बहुत मजे कर लूंगा, खूब चीजें कर लूंगा कि टू कीप माई सेल्फ Yes. एंगेज। बहुत सारी True. चीजें होंगी यार मेरे पास करने। आई आई लव एडवेंचर स्पोर्ट्स। मैं तो सब कुछ ही करता रह सकता हूँ यार। पहाड़ों पे चढ़ना, एवरेस्ट पे चढ़ना, यहाँ पे चढ़ना, Yeah. अब ये करना, अब इसमें मजा नहीं आ रहा तो ये बिजनेस ट्राई Yeah. करना, ये बिजनेस ट्राई करना, ये नहीं तो ये। I too would want to at least live 150 years, Yeah. energetic. That's I yeah, that's true, man. Like if you're living like a good, healthy life, it why not why not have it to be very long, Yeah. right? So absolutely. And my next question for you is then because since you said that you're such an adventurous person, what is your favorite experience you have experienced in your life so far? Which is one experience you have loved absolutely, something which is a little out of the box, which you never thought you would like, or you wanted to try it out and it just turned out to be amazing. So one experience that you have really यार loved. एक तो ना जो जिसने मुझे भयंकर ही खुश कर दिया है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। इट वाज अ फैंटेसी हाँ. कमिंग ट्रू, बट हाँ दैट तो अच्छा. Why can't you? Why can't you share it, man? What kind of fantasy was that was it? a wild fantasy and at a very bro that was very Okay. wild. I can't even share that, but ठीक है मैं और कुछ सोचता हूँ। So maybe away from the camera sometime when we meet After the after the podcast. podcast meeting. But Yeah. yeah, aside Yeah. of that, Hmm. यार हाँ मेरी यार मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो तो मैं कैमरा पे नहीं बोल सकता। सारी चीजें तो ऐसी नहीं हो सकती, Okay. मेरे को बस फिल्टर करना होगा क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कैमरे में। Bro, don't worry. Like my audience, the retention rate now drops severely, and हो सकता है लोग देख भी नहीं रहा हो. So हाँ। only the real ones are watching right now, and they deserve to know the truth. So, So that's the thing. what kind of question answers do other people do give? This is the first time I'm asking such a question, Oh, actually, honestly, because you seem like a more adventurous yeah. person. So I've never asked them, "Ki, what is your ठीक favorite है यार, experience been?" I They talk about how they have traveled to a particular okay. place, like कोई जगह वो हाँ, घूमे उनने, yeah, they did some like they did a they went for a trek or something. That's probably generally what we get. yeah. Yeah. I think I'll keep it safe also, and Hmm. I would say कि यार मेरे को नहीं यार बहुत मजेदार तो नहीं है, बट ठीक है। there's this time when I first went out for my solo travel, Hmm. एंड बहुत बोरिंग है यार ये तो। Hmm. लेकिन हाँ मेरे को सोलो ट्रैवल काफी पसंद है यार, बिकॉज आई फिगर्ड आउट कि Okay. every moment is uncertain, and solo travel is super important. This Hmm. answer is super important, but I would not rate it as anywhere close to the best experience, or मतलब most thrilling experiences I've had, but nonetheless very thrilling Yeah. experience, which opened a lot more doors कि अब Hmm. मैं हर साल 3 बार सोलो ट्रैवल करता हूँ, 7 7 10 10 15 15 दिन। आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मतलब सोलो ट्रैवल इज समथिंग, यही आंसर मैं भी कर लेता हूँ। सोलो ट्रैवल इज समथिंग कि लोगों को लगता है कि यार Hmm.
अकेले क्या करेंगे और ये वो। लेकिन यार एक्चुअली ना अकेले Hmm. तो आप रहते ही नहीं हो। अगर मैं ऋत्विक और निखिल और हम तीन चार लोग अगर किसी ट्रैवल पे जाते हैं तो यार मेरे साथ ना तुम तीन लोग ही हो बस, Yeah. है ना। और लेकिन ऑन द अदर Yeah. साइड जब और हम किसी और से True. दोस्ती नहीं करते, नो इंटरेस्टिंग पीपल, एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग, वो उसी तरह से कैफेज पे जाके हुक्का लग रहा है, उसी तरीके के वही सारी डिशेस ऑर्डर हो रही हैं, Yeah. बैकग्राउंड बदला है साला बस, सब Yeah. कॉन्वर्सेशन से लेकर सब कुछ वही है। Hmm. तो आई तो फाइंड इट वेरी लो ऑन True. एडवेंचर। ऑन द कॉन्ट्ररी आप अकेले जाते हो, आपको नहीं पता अगला मोमेंट कैसा Hmm. होगा, कौन सा रिस्क आएगा क्या नहीं आएगा। तो आई लव ट्रैवलिंग अलोन क्योंकि Yeah. देन आई गेट टू मीट टेन्स ऑफ पीपल इफ नॉट हंड्रेड्स, राइट। क्योंकि ए आप वल्नरेबल Yeah. होते हो, कहीं पे भी आप कैफे में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो। दूसरा, एक्ट ऑफ करेज आपका दिख रहा होता है दूसरे लोगों Yes. को। तीसरा, आप अप्रोचेबल, वल्नरेबल दिख Yeah. रहे हो तो अप्रोचेबल भी हो, और अच्छे करके दिख रहे हो, बढ़िया भी अगर दिख रहे हो, तो फिर पीपल गेट टेम्पटेड टू आस्क द क्वेश्चन बिकॉज Hmm. एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल अलोन, राइट। तब पीपल अप्रोच यू Yeah. पूछने के लिए, ब्रो व्हाट्स योर स्टोरी, बिकॉज दे गेट Hmm. इंट्रीग्ड। They see a Yeah. perfectly normal guy, Yeah. uh, well educated, looking Hmm. nice, सब कुछ है कि दोस्तों के साथ क्यों नहीं आया जब हम लोग आए हैं, what helped, why are you traveling Yeah. around, what's your story, and then they reach out to you, Hmm. and then you get Yeah. to make a lot of friends. So you either you reach out to other people, then they are Hmm. completely fine talking to you. Yeah. फिर सब लोग आपको ग्रुप्स में इनवाइट करते हैं, हम लोग का ये प्लान है Yeah. प्लीज जॉइन अस, हम लोग रात में यहाँ जा रहे हैं प्लीज जॉइन अस, इस कैफे पे हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं प्लीज जॉइन अस। एंड Yeah. देन यू गेट टू चूज फ्रॉम अ प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस कि Hmm. कौन सा ग्रुप, कौन सा प्लान मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, इनके Hmm. साथ मुझे जाना है। और अकेले रहना हो तो आप अकेले रह Yeah. सकते हो, जो भी करना हो आप वो कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ Hmm. पीपल, यू आर नेवर अलोन। अगर मतलब मैं हो आप तो जो Yeah. एटलीस्ट बात कर सकता है, जो भी उसको बात करने का मन हो रहा हो तो। बट अगर आप मैं Yeah. नहीं भी हो, फेयरली एक्सट्रोवर्टेड हो, Yeah. नाइस हाई हाई हेलो कर लेते हो, या उतना करेज वो कर सकते हो, तो भाई आपको बहुत मजा आएगा Hmm. यार सोलो। एंड यू गेट टू सी ग्लिम्सेस ऑफ यू बीइंग Yeah. यू व्हेन नो वन्स वाचिंग। आपको बहुत सारी खुद के बारे में ऐसी चीजें पता चलेंगी कि Yeah. वो दिस इज मी, ओ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग व्हेन नो वन्स Yeah. वाचिंग। तो या सेल्फ एक्सप्लोरेशन, Hmm. सोलो ट्रिप्स डेफिनेटली ट्राई। कितना भी डर लगे आपको, Yeah. बैकअप प्लान रख लेना, एयरपॉड्स ईयरबड्स, बुक्स Hmm. रख लेना एक आध दो, मोबाइल Yeah. मोबाइल आपके पास है ही, स्लीप मास्क रख लेना कभी भी कहीं सोना पड़ जाए, ईयर प्लग्स रख लेना कभी भी कान बंद करके Yeah. सोना पड़ जाए, बस हो या कुछ भी हो, एंड यू आर सॉर्टेड ब्रो, यू आर सॉर्टेड। या Yeah. I think that was one of the most fun rapid या fires I've had. एंड Yeah. नॉट रैपिड एट ऑल। And अभी जब podcast खत्म होना है हम लोग not rapid at all, but ये जब podcast खत्म होना है I'm definitely going to ask you about your wildest experiences. But it's been so good connecting with you, Vidhan, like this, over like it's almost been या 1.5 hours that we have been speaking. या पता भी नहीं चला. So it's great सेम speaking मैन। to you, man, and I'm sure people will find a lot of value out of this podcast. So I thanks for hope so being too, here. yaar. It was, thank you so much for having me, Ritvik. It was lovely talking to you. Glad that we connected this way, जिसमें हमको Yeah. काफी कुछ पता भी नहीं था. And then we got to explore each other Yes. बिना कोई preparation और बिना कोई पहले से bias knowledge के. So it was lovely. It's always lovely connecting Yes. with like-minded people, yeah. So thanks again for having me. Absolutely, man. Absolutely. So, guys, I'll be putting all Vidhan's link in the bio, and you can go and check him out, connect with him, send him a DM, and yeah, see you soon in the next podcast. Hey there, hope you're enjoying the podcast so far. Just a quick reminder, you can actually join our exclusive community of digital business owners by clicking the first link in the description. Get access to like minded folks and masterclasses exclusively recorded by our team.